Now taking their seats because we're about to begin the show for today. What an honor and what a spectacular sight to be standing here amidst a room full of legacy, royalty, and loud whispers of anticipation. I am Ankita. And I'm Shrita. And today we will be your hosts. No, actually, you know what? I got a better idea. Scratch that. Today we will be storytellers. Storytellers of a journey that began 125 years ago, not with technology or titles, but with trust, toil, and timeless values. A story not bound by pages, but by people. Generations of hands that built, hearts that believed, and minds that kept moving forward together. This day is not just about looking back at 125 years, it's about standing tall on a foundation so deep, even time had to take notes. We represent the voice of the celebration today, not because we speak louder, but because the story we get to tell is far more powerful than any microphone could carry. This is the story of Jeevan Ram Sithotrai Group, a name that doesn't just feature in trade documents, but in the trust of thousands across borders, industries, and generations. We began not with capital, but with courage. Not with machinery, but with a mindset. One that believed that a small step rooted in values could become a legacy that outlives lifetimes. And today, that legacy breathes through our diversified family of companies, each one a reflection of our ethos, each one marching in harmony with the rhythm of excellence. From safety to service, logistics to manufacturing, our sister concerns aren't just businesses. They're extensions of the same heartbeat. Each division is unique, yet bound by the same DNA of resilience, reinvention, and responsibility. And then there's our pride behind the profit, our NGO, which reminds us that true success is not just in balance sheets, but in the lives we touch. This mission-driven organization doesn't just do charity, it does change. It believes that giving back is not only an event, but a duty. And today, as we honor our industrial legacy, we also honor our moral one. So, as the lights dim and the show begins, remember, you're not just attending a celebration. You're witnessing a living legacy, one that refuses to grow old, one that keeps writing history, not in ink, but in impact. A very warm welcome to the 125th Founders' Day of Jeevan Ram Sithotrai Group. Now, I don't know about you, but I think every grand celebration deserves two things: deep emotion and a little bit of drama. Don't worry, the emotional speeches are later, but right now, let's raise the curtain on the drama in the best way possible, through rhythm, color, and movement. This opening act isn't just a performance, it's an emotion in motion, a tribute to the journey we have walked together, to the milestones we have conquered, and to the spirit that never stopped dancing, even when no one was watching. Every step you will witness has been rehearsed with dedication, performed with heart, and powered by passion that fuels Jabe's group every single day. So, without further ado, let the music rise, let the feet fly, and let the celebration officially begin. A tribute to the divine source of all power, Adi Shakti, through rhythm, movement, and devotion. Presenting to you our opening dance by Mo and Pratyusha.
नादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे इदं विनित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्सवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो That's what you call an opening performance. Thank you to our very talented dancers for invoking Adi Shakti with such grace. You know, if you've ever wondered what really makes a company last 125 years, here's a hint. It's not just luck, and it's definitely not just coffee. It's the values, the quiet ones, the kind that doesn't always show up on posters, but show up every single day in how people work, how they lead, and how they treat each other. At JS Group, values aren't just a list we framed and forgot. They are the reason we have stayed steady in storms, humble in highs, and have been trusted across generations. And sometimes, the best way to understand those values is to see them in motion. This next video, ladies and gentlemen, is not a flashback. It's a mirror, a glimpse into what mattered to us the most. Not just what we built, but how we built it. May I kindly request everyone to please turn their attentions to the screen now. As Jeevanram Shivdatrai Group completes 125 years of excellence, resilience and growth, it stands not just as a family business, but as a business where every employee becomes family. The 5 core values of JS Group: trust, equity, sustainability, excellence, and innovation steer forward the business. But that's not it.
It also ensures the morale of the business is deeply imbibed for eternity into our people. Let's deep dive into what began, when began, and where began. It all began in 1900 as the journey began in Varanasi, where Jeevan Ramji and then his son Shiv Dutt Rai ji laid the cornerstone of the enterprise. In 1951 came a landmark shift under the leadership of Satyanarayan ji, as the business relocated to Kolkata with a strategic expansion in mind and entry into the steel sector. In 1973, Kailashpati ji joined the leadership, and then it was passed to Mr. Vimal Prakash. 8 years later, Mr. Kamal Prakash joined the business, bringing further stability and vision. In the recent years, we have two leaders joining us from the younger generation, Mr. Chetan Prakash and Mr. Abhimanyu Prakash. Jeevanram Shiv Dutt Rai Group is a multifaceted organization engaged in industrial marketing, turnkey projects and services, manufacturing and digital services for a broad spectrum of industrial clients. We are also taking steps to enter into sustainability, embracing energy efficient processes, reducing industrial waste, and aligning with global environmental goals. The group started building a strong leadership team with Mr. Pankaj Poddar joining in 1995, Mr. Satyavrat Singh joining in 2015, Ms. Sangeeta Ojha joining in 2021, and Mr. Vikas Jain joining in 2022. Apart from the senior leadership team, we have a set of leaders heading various business verticals. Shoumodip Ghosh heading industrial marketing, Somnath Chakraborty heading EPC, Samit Bhattacharya heading AL Circle, Jyotirmay Burman heading static hydraulic, Himadri Shekhar Sinha heading steel technologies, Sandeep Harshvardhan Shah heading the green energy projects, Chandan Khandra heading IT department for the group. From Italy to Spain, from Balco to Bhilai, JS Group's projects echo across continents and industries, showcasing a legacy built on precision, scale, and global collaboration. In every cast house, every refinery, and every plant commissioned over the years lies the unmistakable mark of JS Group's engineering excellence and trust. Whether it was the 15 TPH WRM plant commissioning at Balco or the 3,300 TPD calcination project at Vedanta Lanchigad, every project was more than a milestone. It was a promise delivered. But it's not just about what we build, it's about who builds it. JS Group takes immense pride in nurturing a culture where every employee is valued, heard, and celebrated. From wellness camps to festive potlucks, cricket matches to first aid cheers, we don't just work together, we grow together. Because at JS Group, every project ends with people at its heart. And behind that visual storytelling was an incredible eye of the one whose camera didn't just record movements, they evaluated them. His dedication, precision, and passion has gifted us a masterpiece we will return from time again. Thank you, Prem Malik, for capturing the soul of the celebration, frame by frame. And lending her voice to the story, quite literally, was Pratyusha Chatterjee. Despite the whirlwind of schedule that had her hopping from across countries, she recorded voice covers between layovers, airport lounge, and conference break. Thank you, Pratyusha. Your commitment has turned chaos into clarity and gave our video its heartbeat. Now going to the next segment. I think we all can agree that no company makes it to 125 years without a little something magical in its DNA. Now, and I'm not talking about Excel spreadsheets or reply to all mail chains.
I'm talking about the people, the ones who show up early, stay a little late, and pour their best into their work, and still manage to smile through deadlines, decisions, and sometimes HR memos. Today is the time to honor the heartbeat of Jay's crew, the performers who have gone above and beyond, the ones who didn't just do their job, but did it with excellence, consistency, and quite kind of brilliance that speaks for itself. These awards aren't just recognition, they're gratitude. They are a standing ovation in the form of a trophy. So, with pride in my voice and a little excitement in the air, let's begin the Star Performer Awards, celebrating those who make the extraordinary look a little easy. So first, I would request Mr. Shomadeep Ghosh to come up on stage to present the first set of awards. So the first award, Star Award, goes to Mo Mondal from Metals. Sorry for the interruption. Good afternoon, myself Shomodi from Metal Division. Mo is the youngest member in our team. She's a data analyst. With a constant support, she is helping us to take our business decisions, not only for Metal Division as well as for other departments like Al Circle and other metal teams also. Thank you. Thank you so much for this, and I'm not expecting this award first of all. Thanks to my seniors and my team also. Thank you. Next, I would like to request Samit Bhattacharya to come on stage to present the next set of awards. So the first award will be going to Pratusha Chatterjee from L Circle. So Pratusha, thank you for your dedication, your hard work. You have been a star performer since the day you have joined, I feel, and I think nothing explains it better than the fact that you have literally flown from Vietnam to here, and now you have given the voiceover, you're dancing and doing everything in between. So well deserved. Congratulations. What do I say? 9 months ago, I was in deciding whether I should join Al Circle or not. I was interviewing for a few roles, and then I met AP, and we had almost an hour of chat where he shared his vision, and I felt like this would be something which would be more than just a job. And it has been an enormous, awesome experience. And thank you AP, thank you Samit, thank you everyone, Devanjali and my team for believing in me, trusting me, and letting me do my own ways sometimes. Thank you so much. Samit, I would request you to stay on stage, please, because the next set of award is going to Lavina Chunchunwala from L Circle again. So Lavina, I would just like to say, when I joined, I actually thought of her
as one of those people I should be a little scared of, because she's always very outspoken, but I've seen how she takes that quality into not just making her work better, but she's one of those people who fights for a team furiously. And I think that comes across from the dedication that she gets out of the team. As a team leader, I can, expect no more. So well done, well deserved, congratulations. Lavina will request you to say something about your experience with our company. Hi, good evening. I think today I'll be short of words, but a big shout out for Abhimanyu Prakash for showing faith in me. A big thank you to the entire team. Thank you. Samit, please stay on the stage. You're still not done yet. So the next set of award will be presented by Abhimanyu Prakash. So, sir, if you can just be on the stage. So, good afternoon everyone. I think the next award is going to Samit Bhattacharya. Being the best HOD. And he's mostly getting this award because he's done enough work so that I can take more holidays this year. But on a serious note, I've written down something. I think Samit exemplifies leadership and a never say no attitude, which is amazing to see, which has been pushing the team forward. He's someone who's always championing the right initiatives with the team, but also pushing back with strong logic where need be. So we found a friend who's converted the team culture, which I'm sure many of you in front of me as well as backstage will agree. So huge thank you, and this is just a recognition of you amongst the HOD category this year. Thank you. Samit, you have been saying a lot about others. It's time you give us a little bit. Yeah, I think the only thing I can say is, first of all, this was quite unexpected, because what Sangeeta told me was I need to be on stage for 3 awards, but she didn't categorize which all now I know. But yeah, I mean, obviously a big thanks goes to Abhimanyu, who, from day one, actually even before I joined, has been so supportive that I literally had no choice but to join Al Circle, and what a great decision it has been. So I think a pat on my back for taking that decision, but a big thanks to him, KP sir, and all the rest of the team and the leadership for making it so comfortable and enjoyable. And I truly hope that we can take Al Circle over the next few years to the heights that it deserves to be at. No team, no captain is strong enough to take it by himself or herself. So I thank the whole team for getting me this award, and honestly I'm just taking it on their behalf, but it's them who deserves it more than I do. So thank you. For the next set of awards, I would request Mr. Somnath Chakraborty to be on stage, please. So the award will be going to Krishanu Ghosh from EPC, and just because he was not able to present here, Shomuresh Jana would be the one collecting the award on behalf of him. Good afternoon everyone. Being the head of the EPC, I first congratulate to the award winner for this year, and I have joined with this organization since 2011, and continuously I get the support from our seniors for going ahead for this EPC division, and I would wish and hope that this organization would go for a long way and will get a great success in future also. Thank you very much. Somebody will come to get this award. Video where Krishanu Ghosh would be thanking all of you. Just wait for the video to be on. There's a video playing.
থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে এই পুরস্কারের জন্য নমিনেট করার জন্য, এবং আমি খুব আনন্দিত আমি এই পুরস্কারটা ইউনিসেফের কাছ থেকে পাচ্ছি। আর এই পুরস্কারটার জন্য মানে আমার স্টাফ এবং আমার যারা সাপোর্ট কলিগ আছে তাদের সাপোর্ট ছাড়া এটা হতো না, এবং তার জন্য আমি তাদের সকলকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই, এবং পুরো ইউনিসেফের টিমকে আমি আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে এই Yes, Snehashish Bhattacharya will collect as a project manager for this project of ECL Kumar Dihir one, and he will collect the award in behalf of Kishanu Ghosh. And the next award will be going to Krishanu Banerjee by Somnath Chakraborty itself from EPC as well. Yes, please come, Kishan. He has joined as a deputy of my EPC division and worked continuously with me as a great extent, and he is doing the work excellently for last 3 or 4 years, and he is continuously he is connected with us for the various commercial aspects with the customers, and the project is running very smoothly, so it's a very great honor to award him on behalf of JSW to him. Thanks all of my seniors and colleagues for trusting me, and I am just 2 years back I have joined this company, irrespective of my 24 of years of experience, but I feel this is one of the best company I have ever seen. Thank you all for all of your support and trust on me. Thank you. For the next set of awards, I would like to request Mr. Jyotirmoy Bormul to come on stage to present the next awards. So the first award is going to Shubhankar Pal from Static Hydraulic. Good afternoon, everyone. We are from Static Hydraulic. As you know, we are the manufacturer of hydraulic systems and all. So Shubhankar Pal, please come. So he is 3 years old in Static Hydraulic actually. So by this time, he reached in a position, like let's say he is from electrical background, but he is working on hydraulic design, mechanical design as well as electrical design like panels and all. So he is also heading, you can say, the electrical divisions in Static Hydraulic now. So that is why we congratulated and thank you him to stay Static Hydraulic. I will request you to say a couple of words. Thank you. I am very much excited. That means a lot to me. Thanks to all my co-workers and colleagues. Thank you for this award. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Sir, please stay on the stage. Next set of award is going to Siddharth Kundu from Static Hydraulic as well. সিদ্ধার্থ কুন্ডু অলমোস্ট 15 বছর ধরে স্ট্যাটিকে আছে। মেইনলি এ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য সফট ফ্লোর হিরো অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচারিং সাইডে অ্যান্ড সার্ভিস অলসো। সো we selected him for his dedications and positive attitude for his work. Definitely we have lot of heroes in our shop floor. Shop floor obviously is a heart of Static Hydraulic because it's a manufacturing sector.
So without them, we cannot move. Thank you. প্রথমে বলছি আমি বাংলায় বলছি অ্যাকচুয়ালি আমি আছি 15 বছর ধরে আমি এটা এক্সপেক্ট করিনি খুবই ভালো লাগছে সকলকে ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ For the next set of award, I would request Mr. Pankaj Poddar to be on the stage, please. Good afternoon, everyone. The award is going to Shiladiti Singh from Finance. शिलादित मेरे साथ करीब 18 साल हो गए काम करते हुए फाइनेंस डिवीजन में बिसाइड रेगुलर वर्क ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा इनिशिएटिव फॉर द EPC division. He is doing for the closure of financial closure of the project as well as system is strengthening for the MIS for the management purpose. So he is doing all his best. Thank you, sir. Thanks to all my friends and colleagues. My sincere gratitude to everyone. Thank you. For the next set of award, I would request Mr. Kamal Prakash to be on stage. Good afternoon, everyone. And the award is going to Himadri Shekhar Sinha from Steel Technology. Congratulations, Himadri. Himadri, I think, is probably one of the youngest HODs in our company, youngest by the time which he has served with us. But what I like about not only his knowledge for steel, air pollution control, coal, you name it, and the spirit with which he works, so he has been doing a lot of cross-selling for us, bringing talent into the company, and in a short time he has been able to, show a true entrepreneur's culture. And on the other hand, he does not leave the details. So I am amazed by his capability, the way he has performed so far. So all the best, Himadri, and this is well deserved. Hello. So I am honored and humbled to be standing here today to accept these awards. And also, first and foremost, I would like to express my sincere gratitude to my management, my senior officials, my colleagues. Without you, without your motivation, without your support, it cannot be happened like that, because I always believe not on we, not I actually. I always believe the teamwork.
And I also express my gratitude to my team, and also I get my young J9, Bhaskar Verma. I am really grateful to you. Thank you. Thank you. The next award will also be presented by Mr. Vimal Prakash, and the award is going to Sandeep Shah from Green Energy. So Sandeep is based in, you have a video for him? And who will take the award? Thank you so much for considering me for the Star Performer of the Year award. It means a lot to me. The recognition isn't just mine, but to the amazing team and colleagues who have supported me on every step of the way. I am grateful to work alongside such people and for the leadership that empowers us to do our best work. The company has given me an opportunity to grow, challenge myself, and contribute to something meaningful. I am excited to continue bringing my best to the shared and desired goals. Thank you once again for this recognition. I am honored to be a part of this organization. Thank you very much. So Sandeep has evolved over a period of time. He is an environmental engineer, but today, true to his qualification, he leads our sustainability drive, where we are working in battery energy storage, green hydrogen, carbon capture, PET recycling. All is led by Sandeep. As Mr. Shah could not be here, Subodh Chatterjee will be the one collecting the award on behalf of him. Thank you. For the next set of award, I would request Mr. Vimal Prakash to be on the stage, please. Good afternoon. For the next award goes to Swapnil Verma for being the best regional representative. Swapnil is Raipur based. He's online now. He has been. And we have been observing him because he had been following number of customers. But following a government steel plant, it's not easy. And he had been doing excellent work. And congratulations, and I hope he will keep the good work going on. Hello, myself Swapnil Verma. I am Regional Representative Manager from Chhattisgarh. I am very happy to receive the Star Award, and I want to say thanks to everyone to give me this award. Thank you. And as he could not be here, on behalf of him, Mr. Arijit Ghosh will collect the award. And the next set of award will also be presented by Mr. Vimal Prakash. The next set of award goes to Subodh Yadav for being the best admin staff. सभी जगह भाषा आंदोलन चल रहा है। सुबोध बिहार से है, हम उत्तर प्रदेश से, तो हिंदी में ही बोलेंगे। ये कुशल संचालक है, बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व है और आशा करते हैं ऐसे ही ये कुशलता से कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रूप मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रूप मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे आसमां, सौरभ दे जय जय शिव शंकर, छोटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया, सौरभ दी। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। उड़े उड़े उड़े
में यहाँ कहीं घूम के आए चलो कृष्ण लगाए 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 चलो कृष्ण पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह साथी है फिर भी निकल पड़ा हूं घर से शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम you pagal stupid man Zooby dooby pampara Zooby dooby parambam Zooby dooby nache you pagal stupid man माथे की बिंदिया में वो है पलकों की बिंदिया में वो है तेरे तो तन मन में वो है तेरे भी धड़कन में वो है चूड़ी की छन छन में वो है गंगन की खन खन में वो है चूड़ी की छन छन में वो है गंगन की खन खन में वो है आँखें में घुंघरू महक में पायल मुझे के नाचूंगी घूम के नाचूंगी डोला रे डोला रे डोला रे डोला डोला रे डोला मैं डोला रे डोला मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ बैठी है निगाहें और बिखरी है बात तुमने बनाया है ये अपना ये हाल कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊँ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया
Making me so happy, shaking my body. Hey, hey, Now that was just wow. I really don't have many words, but let's continue with the show. Now, I mean, after that such power-packed performance by the late submitters, who actually made Phil retro fresh and Metro still magical. Now we're going to the next segment for this particular evening. We have celebrated the past, we have honored the present, and now it's time to look forward. In a world where change is the only constant, and how do we as individuals, as teams, as an organization, not just keep up, but stay ahead? This next segment brings together voices who have been at the helm of business, strategy, and innovation, people who have faced change, embraced it, and shaped success through it. Our panel today will unpack just that, the future of business, how to keep up with the changing times, a conversation filled with insights, ideas, and maybe even a few reality checks. Joining us are the leaders who have turned shifting tides into the new frontiers. Let's welcome them with a big round of applause, and maybe keep your notebook ready, because this next 30 minutes might just give you the next big idea of yours. Our discussion, the future of business, how to keep up with the changing times, will be guided by someone who truly knows how to navigate complexity with clarity. Please welcome our moderator, Mr. Abhimanyu Prakash, one of the promoters of JS Group. So, good afternoon everyone. Of course, it's a very tough act to follow for us after that enthralling performance that our teammates gave us. But with a lot of fun, there should be a little bit of reflection, as Ankita mentioned, about what we're here doing as a 125-year group. And as a century-old business, passing down to us in its 5th generation today, we hold the responsibility to not only carry forward the legacy, but also continue to keep up with the changing times that we're in today. And change is the only constant is something that our group has truly embodied. When we talk about the nature of businesses, we started out trading dry flowers, agri-products, had a mill, and today we're at the forefront of metals and sustainability, keeping up with the changing times. Not only about the types of business, but also how we do business has changed. Starting out as a pure play agency house, trading house, we soon realized the need over the decades to keep transforming. We invested in manufacturing outfits like static hydraulic, we invested in EPC companies
to continue to staying relevant. And this continues to push us, which is where today we started to work in the sustainability sector. We've adopted technology with Al Circle, and this has all been built on the foundational pillars, which was created by our forefathers, but also rooted in deep Indian values. And one of these has been the power of people you saw on stage and those in front of us. And it is not just our forefathers or the people you see in the room, but the many who came before us who have created the stage for what we are all doing today. So as we step into the next 25 years of the group and the organization's journey, surrounded by AI, climate crisis, HR revolution and workplace dynamics like we've never seen before, we invite all three of you to help us share insights on how to navigate these changing landscapes. I'd like to give a little bit of a brief introduction to all our three panelists, and I'll start with Richa right next to me. She's an executive leadership coach with over 20 years of global HR experience, spanning India, UK and Australia. Her work sits at the intersection of culture and business, shaping inclusive workplaces and enabling leadership at all levels. Passionate about talent development, Richa has been part of growth organizations building high-powered teams, nurturing leaders, and advocating for design talent strategies that scale. She runs WAW, a thriving community for women navigating the workplace, and is an active mentor across HR and AI communities. Looking forward to hearing more from you today. Next up, next to Richa, we've got Mr. Adarsh Tandon, Head of Training with Multinational Bank and manages Collateral Department of Derivatives. The confluence of HR and finance is very interesting to see and definitely things for us to learn from. He shoulders the responsibility of driving the training agenda of the organization for multiple geographies. And he's a chartered accountant and holds an MCOM and MBA in finance with over 23 years of work experience across corporate and academics. And of course, last but not least, a dear friend and mentor, Costa. Areas of interest is change, culture and communication. He's especially interested in the changing times of AI and how tech will change everything in our lives around us. He holds a master's from LBS and an engineering degree from University of Southampton in UK. He's a mentor in residence with IIM Calcutta Innovation Park, guest faculty at IIM Kozhikode, Mica Ahmedabad, and is a chief business mentor and advisor with ASME Business School under Techno University. And this is only a few of the universities he is now part of, barring the dozens more that he mentors. And on a personal note, he writes in his spare time, and some of his works have been made into Bengali movies, and is hoping that one of his works will soon be converted into a Hindi TV series. He's advisor and mentor with various companies, India and abroad, including our very own Al Circle. And the next line is not my wit, it's his own. Costa used to be a semi-professional cricketer in the UK and India, and still pretends to be a battered, injured cricketer, which is why he's in a sling today. So, I've spoken a lot. I want to pass it over to you guys and just hear about, in this rapid business environment, which is undergoing a profound transformation as we speak, with emerging technologies, consumer behaviors, and global competition. What is your first biggest challenge that comes to your mind that our companies are facing today? And we'll start with you, Richa. First of all, thank you for the opportunity, and you were right in saying that it's going to take a lot to get past what was previously done and what an eclectic performance. Coming back to more serious things, I believe that currently we're going through a huge phase of transformation, a transformation that's happened many times before. This time it's just hit us very differently. And I want to bring in three different lenses to the conversation, if I may. And firstly, beginning with businesses, we're looking at change that we don't even know how quickly it will evolve. There are things that we are envisioning, but it's changing by the second.
I mean, if we look at if we look at the last year and the way AI has transformed our individual spaces, our workspaces, the change is huge. And for businesses to take cognizance of this change, to prepare themselves for this change, at this point in time seems like a humongous task. Not only is the business paradigm changing, but also that means that at the very core of it, there's people, and people are sitting at both leadership levels, and people are sitting at the level where things are going to get executed. And both have to prepare themselves for this huge change. As far as people, I see that there is a lot of resistance. There is a lot of what's going to happen to my role and how is AI going to shape that. And there are a lot of inhibitions at this point in time, a lot of questions at this point in time that we really need to address. And this is where I think leadership right now is really changing face, because the leadership really needs to step up and say, this is where we are headed, this is what the future is going to look like, this is where people, our people need to step up, and this is what's going to be the requirement for tomorrow. And bring in those spaces where people can talk, share, reflect. And I'm sure many organizations have the skeptics and have the enthusiasts and have the AI champions, and we just need to sort of pull them together. So I feel that there is a threefold change at the business level, at the leadership level, and at the people level. With that, I'll let... Thanks, Richa, for breaking that down into three very simple responsibilities. Simple to say, but not as much to act. So, big road ahead for us. Over to you, Adarsh. I'll start with saying first is thank you everyone. Am I audible? Yeah. So first of all, I'll say thank you so much for having me. There are two, three things. In fact, when you were talking about the topic, the first line that came to my mind is talking about change, right? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. I didn't say this, right? It's one of the poets who said this. The reason I'm trying to say this because this is a changing time. Now, whether you look at it from the company's perspective or whether you look at it from the individual's perspective, the first time when computer was introduced, we had a huge amount of people resisting that change, right? Same is actually happening with AI. I can tell you with my personal experience, the first thought people get in the mind is, am I going to lose the job? Is AI going to take over my job? But the fact is, and this is again why you read, you'll understand is, if you do not know AI, you will definitely lose a job to a person who knows the AI. And the change is happening dramatically at a very fast pace. We are talking about artificial intelligence. I can tell you companies have moved to agentic AI. 5 years down the line, we're talking about quantum computing. And I can tell you with a written note, 6 years down the line, quantum computing will take over the world. We will probably be leaving behind the artificial intelligence. The fact of the matter is that the rate at which we are changing, we need to keep the pace, right? And to do that, what is more important is to be aware, right? Sometimes we actually feel it is a definitely uncharted territory. Some of the experienced people will feel I've done enough, and honestly speaking, I'm still learning, right? While we have got engineers sitting on the other side, and a lot of you are here, I am still trying to learn Python. I'm not a IT person, by the way, right? But the fact of the matter is, I didn't realize that I could write a code in SQL and JSON and put it in AI and get the code directly in Python. Which means the entire 2,516 engineers in the organization where I work in no more do coding. Look at the shift in the job that's happening, right? People don't do coding. What are they doing? They are actually getting into a mode where critical thinking is becoming more important. In all these tools, the human loop, the human in the element always is important. Because who's going to think
The thinking element will still remain with the humans, but the final execution has to be done by some of these tools. And for that we need to do and try those tools to figure out what is possible, what is not possible. How many of us really knew that AI can actually write lyrics? We just saw a song. 5 years down the line, it will be AI writing music for you. And there is a site I was visiting, suno.com, I think .ai. If you actually go there, you can write that, right? So what I'm trying to emphasize is it's time for us to actually prep up, get up, and probably look forward to what we can actually learn from the surroundings. Because you need to keep pace, you need to understand what's happening in the industry, because unlike that, you will be left behind. I can name a company, Kodak. The digital camera was launched by Kodak. The first photograph which was took by Kodak, where Neil Armstrong landed on the moon, was belonged to Kodak. They were the ones who actually launched the digital camera. They resisted change, wiped out, filed for bankruptcy, and they lost it. Netflix versus Bridgestar. Bridgestar came into being because they were actually selling those movie DVDs. Netflix adapted, went to the online mode. Look at, and they are also adopting AI, right? Every time when you actually click on that Netflix, you purchase a subscription. You're providing a labeled data set to the AI to figure out what's the next one that you're going to watch. You go to Amazon, you actually buy a product. There is a machine learning happening at the back end, and they try and figure out a pattern. They tell you, this is the kind of products that you actually want, right? So it's everywhere, it's taking over. But the fact is, we need to figure out how we can use it for ourselves, right? But for that, we need to first know it first. I think there's a lot that we can actually work on that. Thanks, Adarsh and Richa. Kaustav, I'm going to shift the question a little bit for you because we heard one common theme between both of them, which was technology. And I would love to hear from you, since you're working with us, many other organizations, that we know technology is at our doorstep. It's entered. It's not at our doorstep, it's entered. So how should traditional organizations prioritize technology adoption at the workplace in the face of automation and AI? Thank you, Abhimanyu. Thank you for having me here. It's a pleasure and an honor and a privilege. This is this grand scale is just outstanding. Thank you for the comments from Richa and Adarsh. I think they set the tempo appropriately. A quick note, I see, obviously I sit at the, I will not say at the cutting edge of technology, but I sit pretty much at a level. I saw LLM much before most of us would have thought of, because I've been working in this for a long time. There's this English adage which goes like, nobody likes change, barring a wet baby. And I think it's a very powerful line. And we have always resisted change because you don't make money in change. I mean, if I have to trivialize the matter, you make money by doing something again and again. So when somebody comes up with an innovation and then you do it again and again, you tend to make money. And then you start making money, you don't want to let go of that. That's a direct correlation to business. So what has happened in the last few years, I'm a computer science engineer way back in the 90s when I was studying. I remember I got a Hotmail ID. I'll be the only person in the room whose Hotmail ID is kaustav@hotmail.com. I was extremely proud of my Hotmail ID. I did not know what to do with it because I did not know who to send mails to. Because my only people I knew who had email was sitting next to me in the lab. My family did not have email. My friends did not have email. It was only 30 years back. Obviously, I am older than many people over here. 30 years seem like a lifetime to the younger ones. 30 years does not feel that long to me. And in these 30 years, everything changed around us, right? So much so that we can pretty much do anything we want with our mobile phone right now, but only 30 years back, in my university of 35,000 people, only 2 people had phones. The Vice Chancellor, and there was this hustler chap over there who always had a phone for some strange reason, became one of the 20 employees of one of the top software companies. So he becomes a hustler. So he saw the change well before everybody else. In these 30 years, look at what has happened around us. And what has happened in the last 5-6 years, COVID came and changed everything for us. And uske baad change is on steroids. Uske pehle change aste aste ho raha tha. And we were changing every 5-10 years. Now we are changing every 5-6 months. The change is such that today I'm a teacher and I have absolutely no knowledge that I can give to my students
because I have learned nothing which will be possibly valuable to them tomorrow. Those of you who are yet to be parents, by the time your children go to school, they will study a different science than you have studied, especially with quantum mechanics and the likes around the corner. In this crazy frenetic pace that we are seeing right now, how do we embrace change? Now, this is the second part. We are also from Calcutta. We don't really want to change. And our city is the most absurd city in the planet. It's frustrating, but we also love it. We have a song by Arthur and Garfunkel and Paul Simon. It goes like, slow down, you move too fast. You need to let the morning last. It's called feeling groovy, right? So हमें रुकना भी चाहिए. And in this crazy time of technology and change, I would advise traditional companies to actually stop a little bit, because you don't know what change you're heading for. One of the biggest worries that I have as a consultant and as an advisor when I go to companies, they say, Kaustav, humko thoda AI kar do. What does that even mean? Aaj se 4-5 saal pehle, IoT was that, shiny object. Now AI is the new shiny object. Why would you want to do it is the big question. Change to karna hi padega. As you very rightly say, 5-7 saal, 8 saal baad sab kuch badalne wala hai. Racha and I were in a session only a few weeks back. उसी सेशन का 2 साल पहले एक सिमिलर HR के लोगों का एक सेशन हुआ था. I had asked them 2030 में कितने के पास नौकरी रहेगी, and it's a valuable question to ask. They got very offended. Now you can think कि 5 साल बाद हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी is one way of looking at it. The other way of looking at it is what can I learn so that I still stay valuable. To look at that, I think the biggest question is any traditional company or any company for that matter, you have to look at only 2 things. Do I have a problem that I can fix? A. B. Can I do something better, find new value? Technology should only come and solve these 2 problems. If you don't have a problem to solve, that itself could be a problem कि आपके पास कोई problem नहीं है. If you don't have a problem to solve, and if you don't have any new value to add, you are going to be left behind. Technology will replace you. Or, do I have a problem to solve? And can I do something better? These are the 2 questions everybody should be thinking about. Thanks so much, Costa. Now, we heard a little bit from you, Adarsh, about the need for people to keep up with technology. And I'm going to actually, I know you picked up the mic, but I'm going to ask a follow-up question to Richa on that, which is, what is the role of leadership to help their teams navigate this change, right? We heard about the responsibility of the individual, but what is the responsibility of the leadership? We've got lots of managers, senior management, promoters, everyone in the room, and many who are going to be the next set of leaders. So what can you share with them? So I think the biggest question on everyone's mind right now is Mera kya hoga? And I think it's become like an identity crisis. That you don't know how and what will happen to your skill set, and it will be obsolete, and of course it's going to be taken over by AI, and media is not helping, the layoff news is not helping. But I want to offer a perspective here, and this is from the coach's lens. I think this is an opportunity where we want to put on the lens of possibility and not lens of limitation. This identity crisis is not an identity crisis. Mera kya hoga was dependent on the previous role that you had. But that does not mean that this is not going to evolve into something which you will have a better hold of, which you cannot now imagine yourself into. So if you put on the lens of possibility for yourself, you will ask yourself, what is it in me that gets amplified because of AI? What is it that I wasn't able to do before that I am able to do now? What is it that I am going to spend time more on now? Which means that, for a lot of people,
A lot of the automated tasks don't need to be, you don't need to spend time on that. And you can use that time towards more strategic things, towards more meatier things that are going to help you do more and bring more value. So the moment you shift your perspective from limitation to possibility, you'll start thinking of, okay, what do I have that I can amplify? What are some of the, if you are good at communication and content writing is going out of the window because ChatGPT is doing all the writing for you, maybe you need to get better at prompting because that's going to be the future of tomorrow. You still use the same skills, but you just created a niche for yourself. And that's what happens when you are able to reframe your perspective and you are able to, you start looking at what else can I do. The leadership here has a very, very important role to play. Your people and your teams are dealing with this ambiguity. And your role here is to offer space for people to come and share their thoughts. Right now, all organizations have 3-4 different kinds of people, like I was saying. The skeptics, कुछ नहीं होने वाला है, we'll all come back to this, देखना बाकी कुछ सब fail हो जाएगा. The enthu cutlets, who are on every tool and they have done every 99 rupees wala training to make sure they know all the tools in the market. And there are experts who've gone into machine learning, they know everything. The idea for leadership is to make sure that they are able to pull all of these people together and create space for conversation so that there is a question and there is a possibility and there is an answer discussed in the same spaces. We also need to take a step back and see how the roles are going to evolve with technology and what it may mean to people. Because in a lot of organizations, if you open up this dialogue for people, it's going to open up, again, the conversation for possibilities to happen. So I believe that the leadership needs to support, to say where we are headed, and to say that your jobs are not going to go and your identity is not going to take a hit. It's just going to evolve with the times. Thanks, Richa. And evolving with the times, gave me and reminded me of something. We've got our 6th generation of the JS group in the room today, who is the champion of technology, all things technology, from homework to school assignments. Another example of how the group is constantly trying to stay ahead of the curve, where it's not becoming an option anymore. But shifting away from technology and others, today I got an email in my inbox for one of the group companies where we asked the head of the business to hire a second in line. And he came back and he said, I don't want to hire a second in line, I want to build one from within the team. Can you talk a little bit about how can we build leaders from within the team? Technology or no technology aside, but how do you build leadership? Probably the mic is playing a truant, I guess. Anyway, but the fact is, this is a very important question, not only for us, but probably for most of the organizations to actually deliberate upon. The reason is, and the fact of the matter is, anybody you hire from outside is definitely costly. And that's the hard truth that let me start to say. And that's prime reasons companies always want to nurture the leaders from within. But the fact is that when we talk about leadership, it's a big gamut, right? When we actually want to cultivate, there are some things which actually stand out. For example, things like emotional intelligence. Now, this is again a very big term. I don't want to deliberate on this topic. We've got people who probably have done it, which is probably expert in talking about it. But I'll probably take just a few times to think through. If you have a person in the room who actually takes the ownership for the work, but does give space to somebody to do something. Things like growth mindset. Again, a very broad term, right? You will not have everything going absolutely as per your plan. Sometimes things will fail. Are you allowing people to fail?
are you actually giving them that freedom to try something new? That's one of the important traits of a leader. At this moment, I still recall, and there's a small video on YouTube of APJ Abdul Kalam, right? Sriharikota, the engine actually dropped, right? He went ahead and said that if the engine is dropped, I'll go and face the press. He faced the press, told the press the engine failed because of me. 4 years down the line, it's his subordinates who went and faced the media, and they said, this exactly has happened because my team has done good work. When things fail, the leaders have to own it, right? These are very small things and technically very difficult to explain, but we need to kind of cultivate these understanding, these skill sets in the minds of the people. And let me tell you, it's a very easy thing to say that you can cultivate, but the fact of the matter is it's very difficult to imbibe. Because after all, we are all human beings. We carry our egos in our pocket. Somebody told me something, I took my ego out. You told me something, right? And that's where that game changes. That leadership is also about trying to give space to that individual, trying to get into his shoes, trying to understand why is that person saying? What is the actual implication of these? So these things like emotional intelligence, growth mindset are very big terms. I'll probably not go deep into it, but definitely some of the skill sets to look for if you really want to be in that chair and you want to lead the team where people do not stand up or do not respect you when you're in the room, but they respect you when you're not in the room. That's the leadership. People should talk about you when you're not in the room, and that creates a sense of ownership and probably a sense of pride. Today, way before I was even born, and that's a true legacy of retention. This day of attrition being so high, we still celebrate people who've been with us for decades at this point. But we've also got people in the room who are joining us next week, right? Even they've come today to attend this program. So we've got this gap between the old and the new, and they all come with their own values. So can you talk a little bit about what are some sensitive ways to bridge these gaps between the old and new? This is not about who can run technology and who cannot. It's just about philosophies. It's about authority and position. Can you talk about that, please? That's an outstanding question. 40 years back though, I was also not born. That's not true. There's a lot of, obviously I'm a Hathoda professor, so I have to talk about a little professorial stuff. I had a actual professor called Jim Flynn, who is unfortunately no more. In 2016, I ran into him in Cambridge University. He was visiting, I was doing a course there, and I managed to actually learn under him like in person only for like 2-3 minutes. But I studied his work a lot in my life. He is famous for something called the Flynn effect. The Flynn effect is a very intuitively very obvious kind of a thing, but it's not. So the Flynn effect says every generation is smarter than the earlier generation. Now, ये सुन के लगेगा हाँ वो तो है, because we see young people and we see how clever they are. And they are cleverer, there's no question, right? There's something called digital natives and digital immigrants. We are digital immigrants, right? We saw a time when we were without a mobile phone. My son is 21 years old. He's also a digital immigrant, but my daughter, who's going to be 13 soon, is a digital native. Uska left hand is longer than the right hand because there's a 3-inch phone stuck there. So about K, she picks that up. And she's smarter because of that. We went to see Mission Impossible, the last one. Just before going, and those of you who've seen it, it had a lot of references to the earlier ones. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं भूल गया था पहले वाले. जाना पड़ा था because somebody has to pay for the expensive popcorn, so I was taken. My son pretended to know everything. He did not. My wife didn't care because she went to see only Tom Cruise. The only person who actually understood the movie was my daughter. Because in the car, she used her phone and Meta AI. Who uses Meta AI? Kids do. To read synopsis of all the other Mission Impossibles which she had not seen. So the 12-and-a-half-year-old was actually telling us. So they are smarter.
And Jim Flynn taught that to me many years back. I see it all the time when I'm teaching. I think ageism is a big challenge in our country, even more so. Significantly, in fact, the earlier generation, my parents' generation, would typically work in an organization, a company for the rest of all their lives. In my generation, it will be 2 or 3 companies, maybe 4 companies. In the next generation, it will be 10, 12 companies. Long service award in the IT and BPO industry आजकल 3 साल में देता है, right? 40 साल में आप क्या दोगे उसके ऊपर, right? But it's also a privilege when somebody spends that long with you, because then he's a co-traveler. She's somebody you're traveling with. Now here is the difference. I think the older lot needs to understand that the younger lot gets things faster. They are just smarter. You got to accept it. But being smart to make quick decisions does not mean you will make the best decisions. Because the older lot has got something the younger lot does not have. That's experience. And with experience comes wisdom. Wisdom is impossible to learn out of a book. Wisdom is something that you imbibe, you appreciate, you feel it inside your skin. So the younger ones may be smarter, but will not be able to appreciate a scenario. May know the science, but may not know the art around it. So it's actually fantastic in a group like yours, where I feel I'm also a part of it. And I see this unbelievable cocktail of people who have been around for so long with people who are absolutely new. The ones who are new are bringing in tools that the ones who are old do not have. Ones who are new do not have the wisdom that the ones who are old have. If I may quickly do a little bit of selling, which I don't have to do, it was all ghar ke log. Al Circle, I think, is a great example of that. It is not because it is a tech company, or it's not because it's an aluminium company. 4 saal pehle, Kamalji was asking me, are you a tech company or are we an aluminium company? And we both agreed, we are both. No tech company can form Al Circle. Only because JS has abnormal knowledge in the world of aluminium, you could do that. But all aluminium companies cannot do the Al Circle ka tech, right? Whatever we are building now, what you are building now, we don't know. So I think it's a combination of both. And the one word that is required at both ends is respect. You see, we expect the younger lot to respect the older people. हम प्रणाम कराते हैं लोगों को. I'm married to an UPite, right? सुबह शाम हम लोग प्रणाम करते थे whenever I'm in the ससुराल, right? It's kind of crazy. I mean, Richa is also from UP. And at the end of the day, मन में लगता है इसको क्यों प्रणाम कर रहा हूँ? Respect needs to come from inside. It's not a pranam. But seniors also need to respect youngers. And that's where the problem lies. If that word is there, respect both sides. आप में कुछ है जो मुझ में नहीं है, मुझ में कुछ है जो आप में नहीं है. It should work. That's the way I see it. Thank you, Costa, when you confront, and what is the one change you would advocate for to future-proof Indian companies? And we'll start with you. I think learning तो सब हो ही जाएगी, but the ability to unlearn will be the biggest anything a company will have, because if you can't unlearn, you will not move ahead. If you get stuck in ये तो पहले ऐसा ही होता था, ये तो ऐसे ही होते आ रहा है, we will never be able to move ahead. So I think unlearning is going to be the biggest thing. I think for me it will be more around be curious. Curious to what's happening not only with your work but what's happening around. And I think that is where the biggest change will come in. Keep asking why. Do not accept anything at face value. And I think that's going to be the key change factor. This is unfair. मैं पहले सोचा था unlearn बोलूँगा. She said it. फिर मैं curious सोचा था. I swear. मुझे अभी कुछ और सोचना पड़ेगा. नहीं, I don't have anything major to add, but I'll just say, I think one thing that he mentioned a little while back
we need to be prepared to fail. In schools, when we do experiments in science, लाल लिक्विड में ब्लू लिक्विड मिलाने से ग्रीन कलर का स्मोक आना चाहिए, नहीं आने से वो एक्सपेरिमेंट गलत है. But the word experiment means that you don't know the outcome. तो स्कूल से ही गड़बड़ है, right? If we are prepared to make mistakes, Richard talked about acceptance, I'll add to that tolerance. Culture means you will be prepared to tolerate things which you are not used to. It is not a set rule that everybody has to conform to that. That's rule. Culture is when somebody does something outside your acceptance and you're okay with that. But obviously you have to set boundaries at some level. Thank you. That would be it. To all three of you for your time, of course to Costa for introducing us to Adarsh and Richa, and for those words of wisdom, right? Every year on Founders Day, we get told as the next generation between CP and me that we need to motivate the team, we need to give them something to think about, and we're so glad that this year you guys were on the stage to do the talking and we didn't have to do that. So thank you so much. Huge round of applause for three of them. And I would like to invite Mr. Chetan Prakash to felicitate our three panelists. नमस्कार सामने में বয়স লোক তারপরে হ্যাঁ চেয়ার দিতে পারে হ্যাঁ ইয়াং চেয়ার দিলে ইয়াং চেয়ার দিলে বয়স্ক ডাক্তার এটা জন্য কেন তাদের 85 লাখ এটা না পিসি The next scholarship goes to Rohit Mali, son of Saddam Hussein Mali. The next award scholarship goes to Anushka Mondol, daughter of Chandan Mondol.
Next, could I please request Madhu Changoiwala ji to come forward and do the honors of distributing the next set of scholarships. The next scholarship goes to Shiv Nanda Kumar and Neetu Kumari, son and daughter of Devnath Yadav. The next scholarship goes to Madhumita Aich Roy, daughter of Manas Aich Roy. The next scholarship goes to Sunita Kumari, daughter of Shiv Narayan Yadav. May I now kindly invite Madhu Agarwal ji to come up on stage and present the next set of scholarships. American Central. Stadium to. চেঞ্জ করে ওই নোংরা মাত্র তাহলে এটা করে বাড়ি এ দেখো চোখের মতো ঢুকে কতজন তোমার 90 পর্যন্ত অপটিক্যাল Next set of scholarship goes to Kalpana Kumari, Chanchal Kumari and Kanchan Kumari, daughters of Subodh Yadav. Next up we have the scholarship for গোল দিয়ে দিস না না তিনটে তো তিনটে 18টা ছাপিয়েছি তাহলে কতগুলো ডিস্ট্রিবিউট হবে টাকা লেখা আছে ও আরেকটা দিতে হবে না 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 ওগুলো পরে দিয়ে দেবে The next scholarship goes to Khushbu Kumari and Neetu Kumari, daughters of Sikandar Yadav. এই সময় সব আমি গান চালিয়ে দেবো হ্যাঁ তুমি পাশেরটা চলো সবই সবে হ্যাঁ অন্য লেভেলের এনার্জি গান তো The next scholarship goes to Shreyansh Kamti, son of Shubir Kamti. দেখেছি কোথায় আমি দেখেছি অফিসে কাজ করে ও যেটা কাজ করতো না হ্যাঁ হ্যাঁ Srijit Bhattacharya, son of Joyjit Bhattacharya. The next scholarship goes to Anindita Shapuri, daughter of Alok Shapuri.
Mukhtar from AIFL, and presenting that particular award will be Vikash Jain. এখানে রাখলাম ব্যাগটা ফটো। হ্যাঁ হ্যাঁ কি দেখছিস? এই যে এটা ভেতরে দিকে খালা এটা চেনো? আচ্ছা ফর ইন্ডিয়া ওকে। Yeah, I mean that is kind of like a set of insights on you, but He is the full package, wrapped in their Suka Chappal and walking straight into the funny world. Please welcome the one and only, the brilliant, unpredictable Revu. He promised to behave, and I promised to pretend that I believe him. So sit back, laugh loud, and give a big round of applause for tonight's stand-up act, Revu. এমন একটা জিনিস কেউ বুঝবে না, অর্ধেক লোক বুঝবে না। কি স্ট্যান্ড আপ কমেডি না বললাম সেন্টিমেন্টে নিয়ে একদম স্ট্যান্ড আপ কমেডি সব জায়গায় Hey guys, little louder and little more. Hey, come on guys, 125th year. This seems like only 25 years. More energy guys, come on, 125 years guys. And आज तो पूरा यूनिवर्स भी आप लोग के साइड में है, बारिश भी नहीं हुआ। मतलब and you guys all made it very wonderful guys, lovely to see you all. कैसा लग रहा है बारिश कोलकाता का? हाँ, 4-5 साल आया नहीं ना तो हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बहुत दिन बाद आया इतना बारिश भाई। मैंने एक चीज नोटिस किया, पता है बारिश ना फालतू का, ये मूवीज हैव जस्ट रोमांटिसाइज्ड रेन सो मच ना, इतना रोमांटिसाइज किया है ना, हम लोग को असली रेन तो यहाँ पे मिलता है। मूवी में क्या होता है, प्यार का इजहार करने का 2 सेकंड पहले बारिश आता है और हीरो हीरोइन दोनों ऐसे करते हैं, फिर गाना बजता है, फिर हो गया उनका। हम लोग का क्या, मुंह में कीचड़ आ रहा है डायरेक्ट। हाँ? मैं इतना रैपिडो लेता हूँ, पता है रैपिडो वाला हमेशा वो बाइक टैक्सी, वो हमेशा बारिश के टाइम पे देख के दादा डबल लग गई। तुम्हारे वजह से मैं पूरा मौसम का मजा नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ? ये बारिश, हम लोग ना बारिश को देख के ऐसे मम्मी लोग की तरह एक्ट करते हैं। अभी तो बारिश कंटिन्यूअसली आ रहा है, जब बीच बीच में आता है ना हम लोग पूरा गुस्सा हो जाते हैं बारिश पे कि ये टाइम है आने का। हाँ ये आने का टाइम, ये होटल नहीं है। बारिश थोड़ी पूछ के आएगा भाई, हम लोग को बारिश चाहिए एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम पे, पता है जब घर पे पहुंच गए, एसी भी नहीं चलाना, पकौड़े तल चुके हैं, दारू का प्लान है, तब आओ बारिश। कोई भी और टाइम बारिश आता है, ये टाइम है आने का, अरे भाई तुम व्हाट्सएप भेज दो फिर बारिश को, 8:30 बजे के पहले मत आना। सो गुड टू सी यू। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रॉपर फेस कर रहा हूँ। आज मैं कैब से आया, आज बारिश नहीं हुआ, देख रहे हो मेरा 500 चला गया। नॉर्मली मैं बाइक से ही आता हूँ, रैपिडो बाइक टैक्सी कौन कौन यहाँ पे यूज करते हैं? आप मत यूज करो, उसका दूसरा नाम मौत है और जो चलाता है वो यमराज है। मत करो यूज, क्योंकि मुझे देखो, मुझे ना आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर स्पीड सो मच, मुझे प्रॉब्लम उनका कॉस्ट्यूम से है। हाँ वो मैं पता नहीं भाई, रैपिडो वाला या तो तुम अपना घर का कपड़ा पहन के आओ, या तो रैपिडो से कोई गंजी वंजी मंगवा लो। ये मेरा रैपिडो वाला ना उस दिन स्विगी का टी शर्ट पहन के आया था। पहला 5 मिनट तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरा राइड है कि नहीं। मैं रोड पे जाके देख रहा हूँ, वही मेरे को बोला दादा इधर के ओटीपी दी।
अभी ओटीपी देके मैं बैठ तो गया राइड पे, लेकिन वो जो पूरा बाइक जर्नी था ना, वो पीपल ऑन द रोड वेर गिविंग मी वेरी स्ट्रेंज लुक्स, कि ऐसे घूरे जा रहा था कि इस साला कोई इसको ऑर्डर किया क्या। सिग्नल पे आके रैपिडो वालों को पुलिस पकड़ता है नॉर्मली, उस बार पकड़ा भी नहीं, पीछे देख के बोले यार टेस्टी लग जे, टेस्टी लग जे। আমি বললাম মুখ সামনে কথা বলুন দাদা। मैंने फिर उसके बाद तो आया स्पीड, यमराज वाला स्पीड ले रहा है। मैंने बोला भाई तुम्हारा आदत वैसा है, बट मैं तंदूरी मोमो नहीं हूं, तो ठंडा नहीं हो जाऊंगा, धीरे चलाओ। हर ट्रांसपोर्टेशन में ये कौन एंजॉय कर रहा है पता है? बारिश, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करता है उनके लिए अभी बहुत एकदम प्यारा मौसम है। जो ऑफिस जाते हैं ना उनके लिए नहीं है भाई। मेट्रो में बाप रे बाप इतना भीड़, आजकल मेट्रो में इतना ज्यादा भीड़। कौन कौन डेली मेट्रो ट्रैवल करता है? गिव मी अ चीयर। बाप रे बाप, एक ही जन आता है मेट्रो से, बाकी सब किससे आते हो? बस, ऑफिस बस में आते हो। अच्छा, ये मतलब इसीलिए 125 साल टिका है, सबको बस से लेके आते हैं। तुम छुट्टी मार ही नहीं सकते, बस नीचे खड़ा है। क्या भी समझा मैं, व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी, सीक्रेट क्या है मैं समझा। ऑफिस का बस लो। नहीं, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ गाइस, और मेट्रो में इतना ज्यादा भीड़ है, मतलब मुझे अभी भी याद है वैलेंटाइंस डे का दिन था इसी साल फरवरी को, और सब ना कपल लोग निकल पड़े थे। मैं मेट्रो के गेट के सामने ना ऐसे खड़ा था, पता है इतना भीड़ था, और मैं कोनी एकदम सीधा करके खड़ा था। कोई आएगा गोता मारूंगा, घुस जाऊंगा अंदर, सीट चाहिए मुझे। पता नहीं क्या हुआ, एक सेकंड के लिए ना मैंने हाथ नीचे किया, कहां से तो भीड़ में मुझे दिखाई भी नहीं दिया, एक हाथ आया और मेरा हाथ को ना पकड़ लिया, और सीधा जाके टांग के लेके ना एक सीट में जाके बैठ गया। मैं बहुत कोशिश किया, देखा किसका हाथ है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सीट पे बैठ के देखा कोई तो एक अंकल मेरे मुलायम हाथों को अपना बीवी का समझ लिए और टांग के लेके सीट पे बिठा दिया। उनका बीवी खड़ी है, मुझे के कार हाथ तो बसे आ जाओ। अंकल मेरे तरफ घूम के बोल रहे बेटा सॉरी बेटा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। एंड उस टाइम पे मैंने बोला कि अंकल कंफ्यूजन नहीं, प्यार हो गया है, अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये मेट्रो राइड के लिए मैं ही आपका सुहाग हूँ। मैंने वो अंकल को पप्पी भी दे दिया। बहुत ये सब यही सब चीज, आप जितना घर से निकलोगे ना उतना ही आपको ये सब चीजें दिखे। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो मैं ना बहुत शहरों में ट्रैवल करता हूँ, तो आई टेक अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स। तो आप लोगों ने देखा ये फ्लाइट में, एयरपोर्ट में आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है? हाँ, आप लोग ट्रैवल करते हो देखना, वो लोग ना लाइटर लेके आपको कभी अंदर जाने नहीं देते। हाँ, वो सिगरेट वाला लाइटर कभी अलाउ नहीं करते भाई। मैंने आज तक एक भी आतंकवादी नहीं देखा जो लाइटर से आके हमला करता है। मैंने नहीं देखा भाई। लाइटर से किसका मौत होता है पता है? हम ही लोग का होता है। जो सिगरेट जलाने गया, मुंह में लाइटर फट गया। और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग मौत होता है भाई। ऊपर जाके क्या बोलोगे? एक बंदा खड़ा है बोले कि हाँ कारगिल, एक बंदा बोले हाँ वर्ल्ड वॉर 2, और तुम बोलो पनवाड़ी। एयरपोर्ट का मैंने देखा है सारा सिक्योरिटी ना एयरपोर्ट में, फ्लाइट के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तुम देखे प्लेन के अंदर सारा सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4 महिला पे। क्यों भाई? एक दो पुलिस रख दो, नहीं सब कुछ है अंजलि, विद्या, दिव्या और श्वेता, सब कुछ वही करेंगे। अरे कुछ भी हो सकता है, हाईजैक हो गया तो क्या करेंगे ये 4 जन? गरम कॉफी फेंक के मारेंगे। उसमें भी बोल देंगे सर वी जस्ट रन आउट ऑफ हॉट कॉफी, वी ओनली हैव पोहा। हाँ तो उसमें गरम पानी डालो, मुंह पे फेंक के मारो, लाइटर लेके आ रहा है टेररिस्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, टेररिस्ट लोग पे पोहा फेंक के भी ये लोग बॉडी के ऊपर जाके बोलेंगे सर कैश और कार्ड। बट बहुत बढ़िया गाइस, यू गाइस आर लवली ऑडियंस। तुम लोग तो शुरू में ये लोग सब कंप्लेन कर रहे थे यार ये क्राउड उठ क्यों नहीं रहा, तुम लोग उठो यार, थोड़ा सा मेक सम नॉइज। और देखो वो वाला साइड बहुत हंस रहा है, ठीक है? तो जोक में कमी नहीं है, कमी तुम लोग में है। हंसना चालू करो सब।
नहीं बट मैं लाइक आई वांट टू लाइक गिव इट अप फॉर एचआर गाइस, जो लोग ये लोग ऑर्गेनाइज किया है. व्हाट अ वंडरफुल इवेंट. ये लोग बहुत ही बड़े. आई डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट शोज, बट नॉर्मली क्या होता है पता है, ऑफिस का ही कोई कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा देते हैं. ये बहुत ही बढ़िया एक सेटअप किया है, तो गिव इट अप फॉर देम. ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं भाई. एचआर नहीं होता तो हम लोग, मैंने कल मेरे से संगीता मैम का बात हुआ था. संगीता मैम कहाँ है? हाँ मैम आपसे बात हुआ था, मैंने बोला था ना नो एचआर बैशिंग. मैं आप लोग का साइड हो के बात करूँ. मैं ये सब नहीं बोलूंगा विल गेट बैक टू यू, ये सब नहीं बोलूंगा. मैं हूं यहीं पे. आई एम हियर. हर कोई कॉमेडियन आता है कॉर्पोरेट शो में ना, एचआर का कुछ भी बोल के चला जाता है यार. मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल. एचआर है इसीलिए भाई. एचआर जो वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू करता है ना, वो बहुत जरूरी होता है भाई. टेक्निकल राउंड में तो ठीक है, कोई और देख रहा है टेक्निकल स्किल्स, बट वो जो फर्स्ट राउंड में एचआर देखता है कि इंसान कैसा है, वो बहुत जरूरी होता है कि इंसान का मानसिक संतुलन ठीक है ना. मेरे ऑफिस में था बंदा, एक फायर होने के बाद मुझसे पूछ रहा है भाई फायर एग्जिट से निकलूं क्या? इसको नहीं निकला चेतन नौकरी. बहुत लाइक एचआर इज ऑल अबाउट गुड. बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है भाई. मेरे ऑफिस में, तुम लोग का ऑफिस में कैजुअल फ्राइडेज है. मैम कैजुअल फ्राइडेज चालू किया आपने? कितना दिन चला था? चलते रहा है. क्या बात कर रहे हो भाई. मेरे ऑफिस में कैजुअल फ्राइडे 4 हफ्ते के लिए चला था. पहले हफ्ते मेल आया था कैजुअल फ्राइडे, ये अगला हफ्ता मेल आया तुम लोग कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गए. उसके बाद वाला हफ्ता मेल आया कि कोई एक सेमिनार देने आ रहा है कि कैसे कैजुअल बनना पड़ता है. और लास्ट वीक में मेल आया कि बहुत खर्चा पड़ रहा है, सेमिनार कैजुअल फ्राइडे ऑफ. बहुत अच्छा साइकिल था. ये सब इनिशिएटिव लेता है भाई हम लोग के. मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, तो वहां पे ना ये आता है, मेल आता है कि ऑफिस पार्टी ड्रेस कोड हर 2 हफ्ते में एक बार होता है. ऑफिस पार्टी ड्रेस कोड. वहां पे एक शाही पनीर का रेसिपी आता है जो आपको समझ में नहीं आएगा. सब कुछ डाल देते हैं वो लोग. कैजुअल, फॉर्मल, एथनिक, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, शेरवानी फ्यूजन. ये पहन के आना है तुमको. मैं वो जाने वाला सलमान खान वाला सैंडो गेंजी और जीन्स पहन के चला गया था. मुझे समझ भी नहीं आया ये देखो आज अवार्ड सेरेमनी चल रहा है. इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. लाइक जो जिनको अवार्ड्स मिले हैं, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू गाइस. बहुत ही बढ़िया. ये एचआर ऑर्गेनाइज करता है. ये बोलता है कि देखो भाई तुम बढ़िया काम करो, एक फिल्म फेयर, ऑस्कर जैसा ट्रॉफी देंगे, बस पैसा वैसा मत मांगो. सिंपल है. और ये डिप्लोमेटिक भी नहीं है. ये सीधा बोलते हैं कि भाई यही है सीन. मुझे प्रॉब्लम है डिप्लोमेसी से. ये मेरा पहला कंपनी में मेरा बॉस आके हम लोग को बोला था कि भाई इस साल बहुत बढ़िया किया हुआ है, तो प्रॉफिट आया, सबको 10,000 का चेक दे रहा हूँ बोनस. हम लोग बहुत खुश हो गए थे भाई. कुछ लोग तो मतलब विश लिस्ट से काट वाट डाल रहा था. फिर बोलता है 2 मिनट बाद, और ऐसे ही काम करते रहे अगले साल तो मैं वो चेक साइन भी कर दूंगा. इससे तो अच्छा है ना. ये लोग सीधा एचआर. हम लोग के कंपनी में एक बंदा है डैनियल बोल के, उसको रिसेंटली अवार्ड दिया है पता है. और उसको अवार्ड दिया है परफेक्ट अटेंडेंस का. हाँ, वो जब से ऑफिस ज्वाइन किया है वो एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं किया है. स्नेहाशीष दा, आप यहाँ के डैनियल हो. देखो एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं किया. ये मतलब पूरा ऑफिस का वैसे ही डैनियल से बहुत ही हम लोग गुस्सा है डैनियल से. तेरे वजह से हम लोग छुट्टी नहीं मार पा रहे. एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं किया. और बाद में पता चला क्या पता है कि ये बंदा डैनियल ये स्कूल में भी नर्सरी से 12th तक और कॉलेज में 1st से 4th ईयर तक एक भी दिन उसने वहां पे भी परफेक्ट अटेंडेंस लाया. मैं डैनियल से पूछा भाई व्हाट इज योर सीक्रेट, तो डैनियल बोलता अरे कुछ नहीं यार, मेरे घर में मम्मी पापा डेली झगड़ा करते रहते हैं तो मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, तो मैं निकल पड़ता हूं. तब मैंने एचआर को जाकर बोला ये तो चीटिंग हो गया. फिर ये डिसिप्लिन के लिए नहीं आ रहा है ऑफिस, इसको काम के लिए नहीं आ रहा, इसको घर पे नहीं रहना. तुम इसका माँ बाप का तलाक करवा दो, अलग अलग घर पे भेजो, तब देखो कितना ऑफिस आता है. 30 साल का नींद डैनियल 3 हफ्ते में निकालेगा. तुमको लगेगा मर बढ़ गया है. बट गिव इट अप फॉर एचआर गाइस. बहुत दे नहीं होता तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग हमें हल्के में लेते हो. वेयर इज द सेल्स टीम गाइस? यो यही तो वर्ड में सुनना चाहता था. सेल्स टीम में हमेशा मैं आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर सेल्स, क्योंकि मेरे को सेल्स आता नहीं.
इसीलिए ना मैं जो बेच देता है, जो सेल्समैन या सेल्स वूमन है, उनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो लोग कोई भी चीज बेच देते हैं भाई। ये क्षमता रखते हैं कि कुछ तुम बोलो कि सेल मी दिस पेन, भाई बेच के दिखा देंगे। बहुत सेल्स वाले मतलब ऐसे एटीट्यूड है कि लाइक वी कैन डू इट। मैंने लाइव देखा है। मैं रिसेंटली फार्मेसी में गया था, वहां पे ना मैं दवाई खरीद रहा था, साइड से एक बंदा आया, उसको बहुत ज्यादा खांसी हुआ था। खांसते खांसते आके बोल रहा है, भैया खांसी हुआ है, कुछ दे दो ना। बोला कि क्या चाहिए? बोला कि कुछ भी दे दो, मुझे नहीं पता, कुछ भी चलेगा, दो ये कम कर दो बस खांसी। तो फार्मेसी वाले ने बहुत ढूंढा इधर उधर, उसको कफ सिरप मिला नहीं, खत्म हो गया था शायद, तो उसने ना लैक्सेटिव पकड़ा दिया इसको लैक्सेटिव पकड़ा दिया। ये चला बाहर जाके खड़ा है। मैं बोला ये क्या किया भैया, आप उसको खांसी हुआ है, आप कफ सिरप तो उसको लैक्सेटिव क्यों दे दिए? बोलते क्या हुआ, काम तो हो गया ना, देखो बाहर चिपक के खड़ा है बट एक बार भी खांसा नहीं है। सेल्समैन लोग का, आप लोग ने कितने लोग मेरे वीडियो देखो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे? कितने लोग देखो? 2 जन। अच्छा ठीक है, तुम लोग को मैं ऑडियंस की तरह नहीं मान रहा हूँ, तुम लोग साइड में बैठे हो यार। बट ये लोग तो देखे, मुझे कोई पीछे आके बोला कि आप जूता पहन के आ गए, आपका चप्पल कहाँ है? नो बट लाइक 2 जन देखे हो। तो मैं ये वाला एक जोक मैं करना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ना छोड़ा है, क्योंकि ये सेल्स के बारे में ही जोक है। और ये जोक आप लोग को मतलब ये मैं ना रिसेंटली वो चप्पल खरीदने गया था भाई, 150 वाला रोड साइड चप्पल नहीं मिलता, वो वाला लेने गया। और वो जो बंदा ऐसे बेचा ना मुझे, भाई मुझे मजा आ गया। वो चप्पल लेते ही बोला, सर ये वाला चप्पल लो, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। ऐसे ना मोड़ा 2-3 बार, सीधा चप्पल था, उसको लेके ऐसा किया, ए देखो किच्चू हो ना, फिर उल्टा साइड घुमाया, ये देखो किच्चू हो ना। आई एम लाइक ये वाला सिचुएशन आएगा ही कब? हाँ, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ ये कब होने वाला है, जब मेरा पैर का नाखून यहां पे होगा। मुझे ऐसा चप्पल चाहिए नहीं जो दुर्घटना होगा तो सिर्फ चप्पल ही बचा। मैं मर चुका हूं, चप्पल मेरे रूम में सूर्य नमस्कार कर रहा है सुबह। तो चप्पलों का रामदेव बाबा है। मैं वो बंदे को बोला, भाई तुम ये वाला चप्पल 150 में क्यों बेच रहे हो? इसका दाम बढ़ाओ, ये तो अमर चप्पल है। इसका दाम इतना कम क्यों रखे हो भाई? तुम कभी नेशनल हाईवे फ्लाईओवर पे जा रहे होगे, ठीक है, देखना 80, 100, 120 पे गाड़ी चल रहा है, ट्रक चल रहा है, बस जा रहा है, देखना मेन रोड के बीच में एक चप्पल पड़ा हुआ रहता है। वो देखो वो यही है, इसको कोई तोड़ नहीं पाया भाई। इसको कोई, भाई तुम 6000 का एडिडास, नाइकी, गुची का चप्पल ले लो, साइड में ना छोटा एक व्हाइट स्टिकर में लिखा रहता है, डू नॉट वॉश विथ वार्म वाटर। अबे नल्ले हो क्या? गर्म पानी नहीं सह सकते? और इसको देखो खाली, ये हाईवे के बीच में लेटा है, इसको देखो खाली, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी फ्लिप होके निकल रहा है, चप्पल इंटैक्ट। ऋषभ पंत का मुलाकात हुआ था इससे, कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव भाई फालतू का बदनाम है, चप्पल आ गया 150 वाला। मैंने वो चप्पल लिया, 8 पीस लिया मैंने उससे, क्योंकि ये चप्पल तो मुझे 80 साल तक टिक जाएगा भाई। तो अमर चप्पल 8 पीस मतलब क्रेजी डील। मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब मेरा फर्स्ट जॉब सेल्स में ही था और मुझे क्विकली पता चल गया था कि मेरे से ये नहीं होने वाला है। ये जो एंथू है ना, ये मेरे पास नहीं है। मैं अपना पहला 2 साल जो जॉब किया था कॉलेज के बाद, वहां पे मेरा एक ही एम था कि मुझे सबने बोल दिया था कि लाइक व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब ऑलवेज मेक श्योर कि साइड में तुम अपस्किल भी कर रहे हो। खुद को अपस्किल करना बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड। तो मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मैं साइड में अपस्किल किया था टेबल टेनिस में। ऑफिस में ही बोर्ड था, बढ़िया, मतलब इतना अपस्किल किया था ना मैं ऑफिस में आने के पहले मुझे वो पकड़ना ही नहीं आता था, उसको क्या बोलते हैं, रैकेट को। 1-2 महीने में मेरा स्टांस ही बदल गया था टेबल टेनिस में। मैं पूरा ये सब शॉट मारता था। मेरा बॉस आके बोला था, या तो वो छोड़ दो या तो जॉब छोड़ दो। मैं कैसे करूँ ये मुझे तो करना है। प्रॉपर 2 साल ट्रेनिंग कैंप था मेरा टेबल टेनिस का, और हर महीने सैलरी भी आता था। बट वही, मतलब देखो, शैतान एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन ये आज जैसे एम्प्लॉइज जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकल के कंपनीज में घुस रहे ना, इन ऐसा तो नहीं था मैं।
कौन कौन है यहाँ पे जेनजी एम्प्लॉइज? गिव मी अ चीयर गाइस. जेनजी कौन कौन है? ये एक रूबा तुम ही लोग हो भाई. ये आप लोग को पता है ना जेनजी क्या है? जो लोग आपके लास्ट अप्रेजल के बाद पैदा हुआ है. जेनजी मतलब जिनको समझ में नहीं आता भाई, ये जेनजी वाले मतलब अरे बाप रे. मुझे ऑलरेडी संगीता से पता चला है अयन के बारे में. अयन कहाँ है? हाथ उठाओ अयन. ओके तुम यहाँ पे हो भाई. तुम दिन में कितना बार वाइब और ऑरा बोलते हो? देखो ये अच्छा है फिर भाई. हम लोग का पता नहीं भाई, ये जेनजी वाले को कुछ और ही मतलब उनको सब चीज पता नहीं है क्या? ये मेरे कंपनी में एक बंदा इंटरव्यू देने आया था सिर्फ 20 रुपए पॉकेट में लेके. आके बोलता है कि आई डोंट इवन हैव मनी टू गो बैक होम, आई नीड दिस जॉब. अब लाइक कि तुमको अगर नौकरी मिल भी गया तुमको सैलरी थोड़ी मिल जाएगा आज. उसको लगा कि इंटरव्यू पक्का तो वहीं पे पकड़ा देंगे ये लोग, 30,000 रुपए लेके घर जाओ. वो साला मेरे से बोला कि कैन आई गेट $100, आई विल रिटर्न यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब. तो मुझे लगा कि ठीक है मिल जाएगा जॉब, 100 रुपए देते. उसको नौकरी भी नहीं मिला और मैं कभी मिला भी नहीं उससे. मेरा 100 रुपए निकल गया. वो बंदा घर से निकला था 20 रुपए लेके, घर वापस गया 80 लेके. प्रॉफिटेबल. छोटा राकेश झुंझुनवाला घूम रहा है, मेरा ही गया 100 रुपया. अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते हैं भाई ये लोग. लैंग्वेज बदल गया इनका पूरा. मैं बता रहा हूं ना मैम, आप लोग के जमाने में, हम लोग के जमाने में, हम लोग का बाप दादा लोग मेहनत करते थे, है कि नहीं? थोड़ा ईमानदारी से लाइफ लीड करते थे, सोसाइटी में सर ऊंचा कर देते थे, फिर लोग बोलते थे रेस्पेक्ट. ही इज अ रेस्पेक्टेबल मैन. ये रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब बदल चुका है भाई. मैं उस दिन ऑफिस के कैंटीन में देखा एक बंदा 2 हाथ में प्लेट लेके खड़ा है, पीछे से एक बंदा का थोड़ा पैंट नीचे कर दिया. साइड से एक बंदा बोल रहा है ब्रो रेस्पेक्ट. ये रेस्पेक्ट था. उसका हाथ नहीं है अभी, तुम उसका पैंट नीचे कर दिए. साइड से एक और बंदा बोल रहा है कि ब्रो यू आर अ लेजेंड. लेजेंड? लता मंगेशकर को हम लोग लेजेंड बोलते थे. मे हर सोल रेस्ट इन पीस. कितना हाई पे वो सुर लगाती थी तब जाके लेजेंड. ये 20 साल का पिंटू पैंट नीचे करके लेजेंड. हर वर्ड का मतलब बदल चुका है इनका. हर वर्ड. मंडे को ये लोग बर्नआउट कुछ बोलते हैं. ट्यूसडे को बोल रहे हैं मेंटल हैंगओवर. वेडनेसडे इज इमोशनल सुनामी. हम लोग जॉब ढूंढने आते थे, पता है? ये लोग वाइब ढूंढने आते हैं. इनको नौकरी से मतलब वाइब अच्छा है ना, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं और फिर लिंक्डइन पे जाके रिव्यू डाल देते हैं. 1 out of 5 did not vibe with the manager. मैनेजर के साथ कौन वाइब करता है? मैनेजर के साथ ना वाइब करने को ही नौकरी बोलते हैं. हम हर चीज में वाइब चेक वाइब. साढ़े 9 बजे को बेसमेंट में ऑफिस है हमारा, सनग्लास पहन के बैठा है. क्यों? वाइब चेक. हमेशा वाइब चेक. जून में हुडी पहन के बैठा है ऑफिस में. जून लिखा हुआ है ब्रो वोक अप एंड चोज वायलेंस. किसको मार के आया तुम? कुछ भी भाई. तुमको 39 डिग्रीज दिख नहीं रहा है? कनाडा नहीं है, कैमक स्ट्रीट है ये. हर चीज में वो लोग, उनका तो लिंगो बदल चुका है. जॉब के लिए छुट्टी मांगते हैं ना, जब ये क्या किसके लिए छुट्टी मांगते हैं मुझे समझ में नहीं आता. हम लोग छुट्टी मांगते थे किस लिए पता है? कि लाइक भाई बुखार है, या तो फैमिली में किसी को बुखार है, या तो जो चाचा 1.5 साल पहले मर गया है उसको वापस से मार डालते थे. सिंपल थिंग्स. ये लोग कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. मतलब एक बंदा मेरे को उस दिन बोला सर मर्क्यूरी इज इन रेट्रोग्रेड सो आई वोंट बी कमिंग इन. मर्क्यूरी इज इन रेट्रोग्रेड. ऐसा एक्सक्यूज दिया, मुझे गूगल करना पड़ा इसका मतलब क्या है. जब गूगल किया मैंने बोला नो मर्क्यूरी इज इन रेट्रोग्रेड, यू आर गोना कम टू ऑफिस बिकॉज़ यू आर माय शनि. क्या एक्सक्यूज है ये? एक जन आके बोला सर आई एम हैविंग अ फुल मून इमोशनल रिलीज टुडे, कैन आई टेक अ हाफ डे? फुल मून इमोशनल रिलीज. मैं तो पहले एक सेकंड सोचा, वो बोला कि कड़वा चौथ का बात कर रहे हो क्या? बोलता नो 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 दिस इज पर्सनल सर, दिस इज पर्सनल. पर्सनल क्या? फुल मून इमोशनल रिलीज क्या है?
मतलब तुम क्या भेड़िया बन जाओगे क्या? 12 बजे को ट्रांसफॉर्म करोगे? पीठ पे बाल आ रहे हैं तुम्हारे? भाई नॉर्मल डेंगू वेंगू के लिए छुट्टी मांग लो ना, दे देंगे। एग्जिस्टेंशियल फैटिग क्या है? हाँ, तुमको जीने में थकान आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड विजन सर। अबे आंख नहीं चल रहा है ना, 10 घंटा रील देखोगे तो क्या होगा? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे इसका भी इंफॉर्मेशन मिला है संगीता मैम से कि यहाँ पे ऑफिस में आप लोग का एक होम ग्रोन गुंडा है। हाँ, जो मतलब ये न्यू कमर्स लोग का गला दबा के, तुम इशिता कहाँ है? कहाँ है इशिता? इधर। हाँ भाई, तुम्हारा नाम इशिता गांगुली है ना? हाँ, मुझे खबर मिल चुका है। देखो, मैं रिवू गांगुली हूँ, हम लोग दोनों गांगुली है। तुम मेरे नौकरी में आके 1 हफ्ता इनको शाइस्ता करके जाओ थोड़ा। ये लोग मतलब 10 मिनट से ज्यादा मीटिंग चलता है तो बोलते हैं सर दिस इज गेटिंग टॉक्सिक। टॉक्सिक, इशिता जाओ गला दबाओ दोनों का, बोलो दिस इज टॉक्सिक। भाई समझ में नहीं आता। 9 बजे को एक बंदा निशांत बोल के नया ज्वाइनी है, कॉलेज के बाद फर्स्ट नौकरी है। 9 बजे को मैंने देखा वो आया, फिर ना गायब हो गया, गायब। मैं ढूंढने जा रहा हूँ, 11 बज गया कि कहाँ गया ये पागल इंसान। मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मिला तो बोलता है कि सर आई वॉज इन द स्मोक रूम सर, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। मैंने बोला नो नो नो, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ, यू वर स्मोकिंग। मुझे पता है इशिता, तुम स्मोकिंग रूम में इनको शाइस्ता करती हो। प्लीज 1 हफ्ते के लिए मेरे रोल पे आ जाओ, मैं तुम्हारे रोल पे आ जाऊंगा। स्मोकिंग रूम में ही रहना, और जब ये बंदा goes to find himself, he will find you, तब गला दबा देना इसका। काम करने का मन ही नहीं है, पता है, काम करने का मन ही नहीं है। मतलब और ऑनबोर्डिंग के पहले आके वर्क लाइफ बैलेंस का बात कौन करता है? हाँ, तुम्हारा कोई वर्क ही नहीं है अभी तक, तुम अभी तक लाइफ बैलेंस कर रहे थे। ये क्या है भाई? मुझे तो मतलब, और कैसे होगा पता है, काम में इनका क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है। अटेंशन स्पैन एग्जैक्टली, किसने बोला रील देख के? 100%। ये 6-7 सेकंड से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाओगे। ये उधर तो वो वाज अ साउंड, दैट वाज मी, आई एम टॉकिंग। मैंने एक स्ट्रेटेजी निकाला है इनका अटेंशन 10-15 मिनट लाइक सेकंड से ज्यादा कैप्चर करने के लिए। इनको कुछ बोलना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है ना, तो एक काम करना, हमेशा पीछे कोई ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम का ऑडियो चला लेना। फोन पे पहले चला लो ऑडियो, और फिर इंस्ट्रक्शन दो, फटाफट दो, क्योंकि गाने के अंदर वो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए। समझ रहे हो? मैं हमेशा करता हूँ, पहले इंस्टाग्राम का ऑडियो चलाता हूँ, उसी में बोल देता हूँ पीपीटी देना, क्वार्टरली रिपोर्ट देना, कल ऑफिस पे आना है, टैव 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 टैव, खूब थे पूरा बंदा, सुना जा रहा है। इनको ना लाइफ ही एक रील के फॉर्मेट में चाहिए। पापा कुछ बोला, स्क्रॉल कर दिया, मम्मी कुछ बोला, स्क्रॉल, मैनेजर स्क्रॉल। क्या बताऊं भाई, मैं पता है ये सब मेरे जो ऑफिस में जो मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ पे 18 जन जेनजी है और मैं अकेला हूँ ऑपोजिट साइड। तो मेरा कोई ग्रुप नहीं, मैं इनमें घुसने का ट्राई करता हूँ कि भाई एक बंदा आया, बढ़िया जोक पड़ा, मैंने बोला कि क्या वाइब अच्छा है ना इसका, तो एक बंदा मुझे बोलता है कि सर जगह का वाइब होता है, इंसान का ऑरा होता है। ये क्या है? मैं इनके साथ डील कैसे करूं? मैं एक जन, ये लोग बाहर से आते हैं काम करने, अकेले पीजी में रहते हैं, एक जन उड़ीसा से आया है, एक जन कर्नाटका से आया है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इनको कभी घर पे बुला लेता हूँ कि आजा भाई घर का खाना वाना खा ले, अकेले रहता है। आया था एक जन, अच्छा खाना वाना खाया, घर में आके सबको यो किया, मम्मी पापा भी यो कर रहे मेरे, ये यो सिद्धांत सिद्धांत हैव डिनर यो। मम्मी को मैं यो बोलते सुनते ना पागल हो गया। बट ये क्या किया पता है, डिनर विनर सब ठीक था। डिनर के बाद मेरे किचन के साइड में जाके ना वेट स्केल पे खड़ा हो गया और वेट मापने का ट्राई कर रहा है। देखो यही बेसिक है, जेनजी को इतना ही पता नहीं है कि एक किचन के साइड में वेट स्केल क्यों रहेगा। वो देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ बहुत टाइम से खड़ा है और कोई वेट नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? वो वेट स्केल है ही नहीं, वो मेरा इंडक्शन कुकर था। उसको समझ में नहीं आया, एक जैसा दिखता है, चढ़ गया उस पे। और ये भी रियलाइज नहीं कर रहे कि ये कुछ और है। उसको लगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल है, तो प्लग अगर अंदर डाल दूंगा तो वेट आ जाएगा।
मैंने देखा प्लग डाल के मैंने इंडक्शन कुकर पे ऐसे कर रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊं उस पे? अलग लेवल पे लोग ऑपरेट करते हैं भाई। कोई तो एक अमेरिका का सीईओ अभी रिसेंटली आके बोला है कि भाई AI will not replace you, someone who knows AI will replace you। ये जेंजी वाले ये स्टेटमेंट लेके सब जगह घूम रहे भाई। मैंने बोला कि आरव चेंज योर बिहेवियर और आई विल रिप्लेस यू, बोलता है नो सर, समवन हु नोज मी विल रिप्लेस यू। अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं भाई। हम लोग का कंपनी भी ऐसे ना कभी-कभी ये छोटे मतलब यंग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ना कुछ हॉलीडे पैकेज देते हैं। रिसेंटली एक को मिला था 3 days 2 nights का पैकेज, गुस्से में बैठा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला कि सर 3 days 2 nights दिया है, दिन ज्यादा है रात कम है। इनका दिमाग में नहीं चल रहा है कुछ, और मुझे ही मतलब डील करना पड़ता है इनके साथ, पता है? इसीलिए मुझे डर लगता है इनके लिए कि 1 साल में 5 कंपनी चेंज। कहां है देवी सर? देवी सर कहां है? 40+ years हो गया ना देवी सर, मुझे सब पता है तुम लोग के बारे में। नहीं आए देवी सर? अरे खुदा है देवी सर, एक तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम गाइस। 40 years। आपको पता है जेनजी के वर्ल्ड में आप 2000 साल काम कर चुके हो। वो लोग इंटरस्टेलर में हैं। 1 साल में 5 साल बैठ सकते हो सर। अरे मैंने सब इंफॉर्मेशन ले लिया है आप लोग के बारे में सर। 1 साल में 5 कंपनी, फिर बोलता है सर मल्टीटास्किंग। अबे मल्टीटास्किंग नहीं है वो, तुम जाजाबोर हो, यू आर अ वैगाबॉन्ड। मल्टीटास्किंग करना है। ठीक है गाइस, मतलब ये लोग अच्छे हैं, ठीक है, ये लोग बहुत हंसे वैसे, तो मैं इनका ज्यादा बुराई नहीं कर रहा। गाइस आया एक और आया था, प्रेरणा कौन है? इन दोनों का ही नाम है। यही लोग बवाल करते हैं क्या ऑफिस में मैम? हाँ कौन? स्नेहाशीष। स्नेहाशीष तो मैं तो 2 बार आ चुका है नाम, ये पॉपुलर लग रहा है स्नेहाशीष। चलो वेरी गुड गाइस। मैं चलो कौन मैरिड है? अबे बहुत लोग ही मैरिड होंगे क्योंकि माँ बाप लोग आए। ये पूछना ही गलत है, कौन मैरिड है? ऐसे ही होगा, ऐसे ही घूम रहे एक साथ। मैं रिसेंटली आई गॉट मैरिड गाइस। थैंक यू भाई, तुम लोग तो बहुत ही कांग्रेचुलेट कर दिए। नहीं गाइस, आई एम हैप्पीली मैरिड, लाइक वाइफ हैप्पी, आई एम मैरिड। सिंपल रूल्स। शादी अच्छा चल रहा है गाइस। शादी के बाद बहुत कुछ मैं वापस से कर रहा हूँ, जो सब आदत ना छूट गया था बीच में। जैसे नहा रहा हूँ। जब बैचलर था तब हफ्ते निकल जाते थे, लैपटॉप ही नहीं निकलता था यहाँ से। अभी डेली नहाता हूँ। ये सब इंप्रूवमेंट आया है। और इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज किया था कि मुझे शादी अभी कर लेना चाहिए जब एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। लाइक मैं ऑटो में जा रहा था और साइड में ना कोई ऐसे वो कचरा खाना आता है ना, वो लोग जला रहे थे कचरा को, और इतना खतरनाक बदबू आया ना। ऑटो में जितने लोग थे सब नाक वाक पकड़ लिए। ऑटो वाला खुद हैंडल छोड़ दिया ऐसे कर रहे। मैंने क्या किया था पता है? मैंने ना ऐसे किया था, अंदर ज्यादा बदबू था। तभी समझ में आ गया था कि नहीं, शादी कर लेना चाहिए। और हम लोग पता है ना, हम लोग नहाने को एकदम एक एक्टिविटी जैसे ही ट्रीट करते हैं कि काम की तरह है नहाना। फटाफट नहाओ, हो गया, आज का नहाना हो गया है, एक काम है। हम लोग ना, ये सिर्फ अमीर लोग जो है ना, रिच बिल गेट्स वाले, यही लोग नहाने को एक एक्टिविटी बना दिए, सेशन बना दिए। देख लो वो सब लोग क्या क्या चीज करता है। 1-1 घंटा नहाता है भाई, पूरा बाथटब में जाके एकदम रोज का पेटल फैला दिया, फिर कैंडल जला दिया, फिर कोई वाइन का ग्लास लेके बुक पढ़ रहा है, सो गया। पागल हो गया तुम। मेरे घर में आधा घंटा से ज्यादा मैं अगर बाथरूम में रहता हूँ ना, बाहर लिविंग रूम में एक ही डिस्कशन हो रहा है, या तो मर गया है या तो भाग गया है। इतना छोटा विंडो है, कैसे भागूं? हाथ नहीं घुसता। 15 मिनट में दया की तरह मम्मी आएगी लात मार के, सब ठीक है ना, कपड़ा पहन लो। आप घुसी क्यों? मैं नहा रहा हूँ। शादी के बाद एक्टिविटीज वो सब आ रहे वापस। लाइक अभी मैं रोता हूँ, शादी के बाद वापस से रोना चालू है।
और तुम लोग ऐसे मत समझो कि मेरा बीवी को मारती वारती इसलिए मैं रोता हूँ, नहीं नहीं, मैं अपने फायदे के लिए रोता हूँ। तुम अगर रो दोगे ना, तुम्हारी बीवी पिघल जाएगी। मुझे ये बात समझ में आ गया कि मेरा मम्मी पापा 26-30 साल से झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पापा कभी रोते ही नहीं है। मैंने एक दिन रोया, मैंने देखा कि मेरा वाइफ एकदम इमीडिएटली अपना हैंडकरचीफ निकाल के सरेंडर कर दी। मैं जैसे ही, अब सीरियसली बोलो मेरा ही गलती था, सॉरी, हट हट कुत्ता, हट कुत्ता, अगर तुम रोते रोते बोलो ना मेरा ही गलती है, आई एम सो सॉरी, वो अचानक से बोलते ओह माय गॉड इट्स ओके, ओह माय गॉड अ मैन हू क्राइज, सो क्यूट, आई वाज रॉन्ग, यू वर राइट। मैं रोते रोते बोलता हूँ हाँ मुझे यही सुनना था। बहुत चीजें कर रहा हूँ शादी के बाद, इट्स गुड मैन, इट्स लाइक मेरा बीवी ने, माय मॉम एंड डैड दे आर बोथ रिटायर्ड, तो मेरा बीवी ने बहुत एक अच्छा काम किया है, वो मेरे मम्मी पापा को भी ना वो ड्रीम 11 में टीम बनाने बोलती है और फुल एडिक्ट बनाती है। आईपीएल से शुरू हुआ था, अभी आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा डेली उठ के वेस्ट इंडीज का कोई 10 ओवर का मैच में 4-4 टीम बना लेते हैं। मेरे मम्मी को स्पोर्ट्स का आइडिया भी नहीं है, उनको सिर्फ जुआ से मतलब है, उनको सिर्फ जुआ से मतलब। उनका टीम भी मेरा पापा बनाता है, और जब हम लोग के घर में एक साइकिल होता है, जब भी टीम हारता है पापा को ही गाली सुनना पड़ता है कि टीम बनी चोटा, हाँ? और मम्मी को क्या है पता है, वो सब लोग टीम में चाहिए जिनको मम्मी जानती है, लाइक एज इन पर्सनली जानती है। जैसे पापा ने एक दिन शशांक बोल के किसी को टीम में नहीं लिया, मम्मी गुस्सा हो गई कि शशांक को আমার সকালে রক্ত নিয়ে গেছে, मैं पैथोलॉजिस्ट, उसको तुम टीम में नहीं रखे, और उसी दिन शशांक अच्छा खेल दिया। अभी मम्मी का टीम बनता है, एक शशांक रहता है, एक विवेक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का नाम है वो रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट का नाम रहता है एक रंजन, वैसा टीम बनता है। मैंने नोटिस किया है कि हम लोग का घर पे जो ये साइकिल है ना, ये सुबह से स्टार्ट होता है, सुबह को टीम बनता है, फिर 4-5 घंटा ना प्रॉपर डे ड्रीमिंग चलता है, फिर मैच आता है और सपना टूट जाता है। सिंपल साइकिल है। वो डे ड्रीमिंग वाला पार्ट ना, वो सपना देखने वाला पार्ट मुझे बहुत क्यूट लगता है। ये लोग एकदम टीम बना के ना, मम्मी पापा दोनों डिसाइड कर लेते कि 5 करोड़ तो आने ही वाला है, अभी कैसे बांटे इसको, किस किस को दे और किसको कितना मिलेगा, डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर ओवर द लास्ट 2 डेज। परसों फोन नहीं उठाया, नहीं, उसको 10,000। मैं बोल रहा हूँ वो तो आपकी सगी बहन है मम्मी, लेकिन तुम चुपचाप रहो, अपने 1 करोड़ लेके जाओ। सबसे अमेजिंग लगता है मुझे ये हाइपोथेटिकल सपने में भी ये लोग टैक्स भरते हैं। पापा आके बोलता है कि 5 करोड़ 5 में मत बांटो, 30% तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन सपने में भी तुम्हारा गवर्नमेंट है। नहीं, बहुत एडवांटेजेस है गाइस शादी करने के, देखो तो मम्मी पापा को बिजी करते हैं वाइफ, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही भाई, जैसे मेरी बीवी ना वो खराटा मारती है सोने के टाइम। कौन कौन है यहाँ पे जो खराटा मारते हैं सोने के टाइम? कोई नहीं बोलेगा, पता है, क्योंकि जो लोग खराटे मारते हैं ना वो लोग झूठ भी बोलते हैं, स्ट्रेट झूठ बोल देते हैं, एकदम नॉर्मल। मार रही है मेरे सामने, मैं बोल रहा हूँ अरे क्या हो रहा है, उठ के बोलते कि कौन, किसने मारा? मी? नो, नेवर पॉसिबल ओनली। फिर घूम के तुम झूठी हो क्या? पता है मेरा अगला दिन पूरा निकल जाता है उसको ये कन्विंस करने में कि तुमने एक्चुअली में खराटा मारा है, सारा रात तुम नाक डाक रही थी। मेरे पास मेरे फोन में जितना भी वॉइस नोट्स है ना, सब 8-10 सेकंड के हैं, और जहां पे मेरा बीवी खराटा मार रही है, सुबह उठ के सुनाता हूं, देखो ये वाला ट्रिमर वाला साउंड सुनो। मेरा बीवी खराटा मारती है स्टेजेस में, पहले ट्रिमर जैसा चालू होता है, फिर फॉर्मूला 1 का कार बन जाती है, और लास्ट में आता है जेसीबी, खुदाई वाला ट्रैक्टर। मेरा हमेशा एम रहता है वो ट्रिमर वाले पार्ट में ही सो जाओ। एक बार कंस्ट्रक्शन चालू हो गया ना तो सो नहीं पाओ। मेरा बीवी का वही मतलब वो ना, उसका वो स्लीप वॉकिंग टेंडेंसी भी है थोड़ा, लेकिन वो आलसी है ना, तो वो स्लीप वॉक नहीं करती, उसको जो जो करना होता है वो इंस्ट्रक्शन बोल देती है। हाँ, नींद में ही। कितना बार बोला है यार एक्वागार्ड को बंद करने। अभी मैंने ये सुना
दिमाग तो मुझे लगा एक्वागार्ड शायद चल रहा है, मैं जाके देख रहा हूँ एक्वागार्ड तो बंद ही है, मैं वापस आके सो गया। स्लीप वॉकिंग मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ स्लीप टॉक कर रही है। कभी कभी तो बात ना मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि बात मैं सुन पा रहा हूँ, सपनों में कुछ देख रही है और वो बात कर रही है, और बात मेरे बारे में है, बात मेरे बारे में, एक्वागार्ड के बारे में नहीं है। ऐसे बात करती है, कौन थी वो लड़की, मार डालूंगी मंजुलिका। उस रात को मैं सोफा, मुझे रिस्क नहीं लेना। बहुत मतलब हम लोग का फैन लेके झगड़ा होता है, पता है। यहाँ पे मैरिड कपल से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है जहाँ पे जिनको दोनों एसी और फैन दोनों एक साथ चाहिए होता है? हाँ मैम, हाँ ये भी मैम, आप भी हंसती है, आपको भी चाहिए ना? हाँ क्या है आप लोग सर आपको चाहिए क्या? अभी फैन चाहिए, देखो ठंडा है, आप लोग हमेशा हॉट हेडेड रहते हो यार। मेरा बीवी को हमेशा ना फैन एसी दोनों एक साथ घूमना चाहिए। क्यों? एसी 16 पे है, फैन 7 पे है, और घुमा रही है, और है ही नहीं रेगुलेटर में, और घुमा रही है। फैन हमेशा चलना चाहिए। मैं उस दिन बेड पे उठा, कुछ काम था, बोलती देख के मुंडी कट जाएगा। अरे तो फैन 1 सेकंड के लिए ऑफ कर दो ना, विधवा हो जाएगी लेकिन पसीना नहीं आने। और ये आर्गुमेंट तुम अपने वाइफ के साथ कभी जीत ही नहीं सकते कि फैन ऑफ ही रहेगा। मैम आप लोग ही जीतते हो ना, आप लोग का ही चलता है, क्योंकि आप लोग के पास सीक्रेट निंजा टेक्निक है। मेरा वाइफ का निंजा टेक्निक क्या है पता है? फैन ऑन करो से यू आर चीटिंग ऑन मी इतना जल्दी आता है ना, आपको चक्कर आ जाता है कि फैन ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? डू नॉट वांट मी टू स्टे इन द रूम? हु डू यू वांट टू स्टे इन द रूम विद? हु इज दिस न्यू गर्ल? व्हाई आर यू चीटिंग ऑन मी? अरे चलाओ फैन, चलाओ फैन, मैं कांप लूंगा भाई। तुम फैन चलाओ, ये बंद करो। मेरे लाइफ में पता है ये मेजर एक बड़ा दुख है कि वाइफ हमेशा फैन 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 करती है, और इस दुख में मैंने कभी सुसाइड किया ना, फैन से लटक के, तो मेरा बीवी कमरे में आके वो वाला फैन भी ऑन कर देगी, मैं घूमते घूमते लटकूंगा ऐसे। कोई बचा लेना प्लीज मुझे। बट मेजर जो प्रॉब्लम, लाइक अगेन आई लव माई वाइफ, और मेरा बीवी शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गई है। कौन कौन यहाँ पे है जो लोग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हो? तुक ताक अंधविश्वास, गिव मी अ चीयर इफ यू बिलीव। वेरी गुड, मैं भी आप लोग का जैसा ही था। उसको जानता था शादी के पहले हाँ, मेरा गर्लफ्रेंड थी सर 2 साल। अरे नहीं, अरेंज मैरिज नहीं था सर। मैं भी उतना भी जेन एक्स नहीं हूँ, मैं बीच में आता हूँ, वाई जेन वाई। मेरा शादी के पहले बीवी एकदम, मेरा गर्लफ्रेंड एकदम मॉडर्न गर्लफ्रेंड थी सर, मतलब कोई सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती थी। शादी के बाद पता नहीं उसने किससे बात किया, अभी वो ना, वो हम लोग बंगाली है तो वो पहनना चालू की, एक रेड और एक व्हाइट। हाँ, शाखा और पोला, एग्जैक्टली मैम, हाँ शाखा और पोला। अभी देखो रेड और व्हाइट में से शाखा कौन सा है, पोला कौन सा है, मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये दोनों मेरा लाइफ डिसाइड करते हैं, मैं कितना लंबा जीऊंगा ये शाखा पोला डिसाइड करते हैं। और ये बात ना मेरा बीवी मेरे को बोल बोल के मेरे दिमाग पे घुसा देती है। डेली कुछ ना हो, देख इसको कुछ हो गया, तू ये क्या है, डेली ये सब करती है पता है। और तुम अगर बार बार एक चीज सुनोगे ना तो तुम्हारे अंदर भी थोड़ा खौफ बैठ जाता है कि शाखा वाला को कुछ हो गया तो मैं उस दिन मेरा बीवी का साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने गाल पे चाटा मार दिया मुझे, पर मैं गाल के पहले ना शाखा वाला देख रहा था कि ये ठीक है ना, बेइज्जती सह लूंगा मैं, 70 तक जीना है। हर बात पे और मतलब इतना कैजुअली बात करती है ना, उससे और डर जाता हूं मैं उस दिन सब्जी मार्केट में गया था मार्केटिंग करने, वहां पे खड़ा हूं, अचानक से फोन करके बोलती है कि ए बी वेरी केयरफुल व्हाइल कमिंग होम, शाखा टूट गया है। ऊप्स, मैंने बोला पोला कैसा है, तो बोलती है कि पोला तो लास्ट वीक से ही ज्वेलर के पास है, वो तो लास्ट वीक ही। मैंने बोला क्या, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, काट दी फोन। मैं जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा हूं, मैं एक स्टेप नहीं ले पा रहा हूं कि शाखा टूट गया है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग के सामने जाके सोचा हूं रास्ता कैसे क्रॉस करूं, शाखा टूट गया है। 2 स्कूल का बच्चा मुझे अंधा समझ के क्रॉस कराने आए,
मैंने उनको बोला तुम लोग गुड बॉय हो, मेरे साथ लॉरी के नीचे आ जाओगे। शाखा टूट गया है भाई, समझा करो। और पौला भी नहीं है, डबल ट्रबल। मैंने यही देखा है भाई, मेरा वाइफ का हर ज्वेलरी में ये पावर है कि उससे मेरा मौत हो सकता है। शाखा पौला को कुछ हुआ, मैं मंगलसूत्र गया तब तो मैं मंगलसूत्र टूटता है मेरा तो हवाई टाइट हो जाता है भाई, क्योंकि मैं ना टीवी सीरियल देख के बड़ा हुआ हूँ भाई, कहानी घर घर की, कुमकुम, कसौटी जिंदगी की, यही सब मैंने बचपन में देखा है घर पे। मेरा कंडीशनिंग ही वैसा है। मुझे पता है कि पत्नी का मंगलसूत्र टूटा मतलब पति गॉन। एक एपिसोड मैंने आज तक नहीं देखा जहां पत्नी का मंगलसूत्र टूट जाता है और वही एपिसोड के एंड तक पति नहीं मरता। उसको अचानक से इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, बारिश में हाईवे पे निकल जाता है, फिर आवाज आता है और दिया बुझ जाता है। मुझे सब पता है भाई। मैं बोला ना मैं रैपिडो यूज करता हूं, जब से ये मंगलसूत्र टूटता है मैं कैब, कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं यही उसको उस दिन बोल रहा था मेरी बीवी को कि देखो तुम्हारे मंगलसूत्र से मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे शाखा पौला से मैं मर जाऊंगा, तब तो ये सब चीज मुझे पहनना चाहिए ना। तुम कैजुअली पहन के तोड़े जा रही हो हर हफ्ते, ये सब मुझे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अ मॉडर्न मैन, मैं इनसिक्योर नहीं हूं कि मैं विमेंस ज्वेलरी पहनूंगा, नहीं नहीं, एकदम मुझे पहनने दो, मैं जत्न से रखूंगा इसको। मैं पैंट थोड़ा नीचे करूंगा, टोपी उल्टा करूंगा, मंगलसूत्र शाखा पौला रैपर बन के घूमूंगा, एमसी गांगुली। अरे मेरा वाला आपका अपडेटेड टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा भेज दो, देख रहे हो? तो आप ये बोल रहे हो कि शाखा को टूटना नहीं चाहिए, तो मतलब मैंने बीवी फालतू का तोड़े जा रही है, इससे तो मुझे और डरना चाहिए सर। मैंने उसको, थैंक यू सर, मैंने उसको यही बोला देखो तुम्हारे हर ज्वेलरी में पावर है, मेरे में कोई शक्ति क्यों नहीं है? मुझे भी एक अंगूठी मिला था शादी में, इसमें कोई पावर नहीं है। इसमें क्या पावर है पता है? इसमें आई प्रॉमिस टू लव यू फॉर एवर, इसमें प्रॉमिस ये सिर्फ, उसके बारे में मुझे भी कुछ तो पावर दे दो कि मैं ये वाला निकालूंगा तो बीवी को लूज मोशन आ जाएगा। Hey, you guys are the fantastic crowd guys, बहुत बढ़िया क्राउड था तुम लोग, मतलब I had so much fun, that was the time, that was my set, that was a beautiful crowd guys, तुम लोग बहुत ही, ये वाला साइड तो guys बढ़िया guys, एक चीज साबित हो चुका है, जेंजी के बिना कंपनी रन नहीं होता guys, बट बहुत ही बढ़िया गया तुम लोग सब। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन शाखा पौला। मैं बीवी को पकड़ने वाला हूँ घर जाके कि तुम तोड़ते रहती हो, ये तो टूटना नहीं चाहिए, प्लास्टिक से है, एमओसी है, मैंने सब कीवर्ड्स याद कर लिए। हाँ बताइए सर। या now I have doubts on my wife. She wants to kill me, but she doesn't know how to. But thank you so much guys. My name is Jibu Ganguly. You guys are an absolutely brilliant audience. Again, congratulations for 125 years guys. 125 years, बहुत बड़ा बात है. Enjoy yourself. Have a great evening. I'm gonna call on the host of the night again. Thank you so much. Good night. Rivu, can I kindly request you to stay back for a moment? And now to mark this moment with a token of appreciation, may I request Mr. Samit Bhattacharya on stage for the felicitation. Rivu. I know we've had awards, applauses, speeches, scholarships, and even survived a stand-up act, barely. And if you thought the best was behind us, I'm here to tell you we saved a little bit of sparkle for the finale. Now, for the final dance performance, we're not going to reveal much, because some stories are meant to be felt, not explained.
So sit back, open your heart, and let this journey move you in ways words never could. What are the thoughts? বাহ ভালোবাসা দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া, ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই গো যারা, বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই গো যারা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া।
Okay, can we all just take a second to recover? Because I'm still deciding whether that was a dance performance or a grateful celebration where every step told a story. While some of us were still figuring out our left foot from our right, there was one person who never lost the beat, not once. She led with patience and a playlist probably that haunts her dreams now. Big love and a standing ovation to Mo Mondal. Can we please have her on stage? Our in-house little queen, choreography captain and honorary cardio coach, you made every step shine brighter. And to the entire team of performers, we request you all of you to come up on stage. You brought the moves, madness, and the magic. Thank you for showing up performance where this entire evening, every light cue and every segment, every seamless transition didn't happen just by magic. It happened because of a team, a brilliant, sleep-deprived, checklist-obsessed, cool under-pressure team. To our 3 powerhouse organizers, Sindhur Kumar, Shubhrata Chakraborty, and Ankan Ghosh, please join us on the stage as well. And to our craftsmen of the chaos, our staff members, Uttam Haldar, Babla Shordar, Bhimadhar Robi Das, aka is known as Montuda, and Dipankar De, who turned plan into perfection and today is the reflection of that dedication. Creativity and unstoppable spirit. They weren't just behind the scenes, they built the scene. So a very, very big applause for all of these people. And finally, we would like to express our heartfelt gratitude to the management, the promoters, and the senior leadership team for giving us this opportunity to organize this event. We are also deeply grateful to the HODs and to their support for allowing their team the time to prepare, practice, and rehearse even amidst of the packed schedule. So everyone, thank you so much for your time and support. We really, really appreciate that.